ऑलराइट, सो सेशन लाइव हो चुका है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं अपना। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। मैम कंफर्म कर दें प्लीज़। Yes, ma'am. Screen is visible and voice is also clear. Sure. So, Assalamu alaikum everyone. As you know, my name is Muskan, one of the moderator of iCode Guru. वेबिनार स्टार्ट करने से पहले iCode Guru का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो एज वी नो दैट कि iCode ग्रुप का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है, जिसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। iCode ग्रुप पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो हमारा मिशन क्या है? iCode ग्रुप का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड हैं अपने स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो iCode ग्रुप का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? iCode ग्रुप पे 15 सेशंस पर डे कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें एक वीकली वेबिनार है जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं। 2 वीकली वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम एडवांस या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग जैसे टॉपिक्स पे गौर करते हैं। और पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्सेज मल्टीपल रन करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट्स हैं, CS के स्टूडेंट्स हैं, नॉन टेक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए डिफरेंट और मल्टीपल टाइम स्लॉट्स पे पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं। आर्ट्स, GRE और ड्यूलिंगो के मल्टीपल सेशन iCode ग्रुप पे कंडक्ट किए जा रहे हैं 2025 की स्कॉलरशिप्स को हंट करने के लिए। इसके अलावा हम फोकस करते हैं DSA और लीड के क्वेश्चंस को, जो कि मल्टीपल सेशंस iCode पर बिगनर्स के लिए और एक्सपर्ट के लिए लीड किए जाते हैं, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करते हैं और फैंग कंपनी के इंटरव्यूज को करते हैं थ्रू दी लीड कोड प्रॉब्लम्स। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस जैसे एडवांस कोर्सेज भी iCode पे रन किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। इनकेस अगर हमारा लाइव सेशन मिस हो जाता है तो हम iCode के ऑफिशियल फेसबुक पेज से प्रीवियस या फिर अपनी जो हमारा मिस हुआ सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। अब बात करते हैं iCode गुरु की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। iCode गुरु के 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स में और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। iCode गुरु हेल्प करता है स्टूडेंट्स को फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली USA। और iCode गुरु हेल्प करता है इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जिन स्किल्स पे iCode गुरु अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करता है उनसे उनके रिज्यूमे या CV जो है वो आउटशाइन करते हैं, जिनके चांसेस जो हैं इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने के इंक्रीज हो जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम सभी वाकिफ हैं और इसका एक बड़ा प्रेडिजियस इवेंट होता है CS50 पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और 2024 में पाकिस्तान का सेकंड रैंक आया था इस इवेंट में, जो कि हमने 9x9 पजल्स जो है सॉल्व किए थे। 60 टीम्स पाकिस्तान की विन कर गई थी और पाकिस्तान का सेकंड रैंक जो है वो बना था। और इसमें हमने इंडिया को डेफिनेटली वी हैड लेफ्ट इंडिया बिहाइंड फॉर दिस कंपटीशन। और 38 टीम्स जो थी iCode गुरु से थी, जिन्होंने सक्सेसफुली 9x9 पजल सॉल्व किए और कंपटीशन को विन करने के लिए एक तरह से सक्सेसफुल किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द अदर पॉपुलर यूनिवर्सिटी, इसको हम सभी जानते हैं, 2024 का इवेंट था कोडिंग प्लेस, जिसमें हम सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया। इस पे मुख्तलिफ और मल्टीपल वेबिनार्स और वर्कशॉप कंडक्ट करवाएं, जिसमें हमने एप्लीकेशन प्रोसीजर को देखा। इन रिजल्ट 72 मेंटर्स जो हैं और सेक्शन लीडर्स या हम टीए कह सकते हैं सिलेक्ट हुए इस कंपटीशन में, जो कि एक बड़ी हाईलाइटेड और बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए, विच इज़ वन ऑफ द अचीवमेंट कि हमारे 72 मेंटर्स जो हैं इस प्रेडिजियस इवेंट में सिलेक्ट हुए। अगर मैं 2023 की बात करूं तो हमारे पूरे पाकिस्तान से 11 जो हैं वो मेंटर सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 10 iCode गुरु के थे उस टाइम। 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम iCode गुरु पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023 और ये एक हाईलाइटेड न्यूज़ रही थी 2023 की। और 3 इंटर्न्स जो हैं इतिहाद एविएशन ग्रुप में सिलेक्ट हुए अबू धाबी इंटर्नशिप्स के लिए एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स इन USA। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने 18 US की यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड जो एडमिशन है वो सिक्योर किए, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, UET लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात।
और बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने 18 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया और फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो सिक्योर की, जिनका प्रोफाइल कुछ इस तरह से था कि CGPA की रेंज 3.1 टू 3.8, आर्ट्स रेंज 6.5 टू 7.5, नो पब्लिकेशन NGR रिक्वायर्ड फॉर दैट स्कॉलरशिप, स्टडी गैप जो था वो 1 से 15 ईयर्स का था, 100% फी वेरियर ने रिसीव हुआ फॉर एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1100 to $3000 पर मंथ, और उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। सो करंट अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास ये है कि UC बर्कली कोडिंग कंपटीशन जो है फॉल 24 का इस वक्त चल रहा है। तो वी नो दैट कि UC बर्कली जो है वो एक रिनॉन यूनिवर्सिटी है और ये कोडिंग कंपटीशन इंट्रोड्यूस करवाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो iCode ग्रुप पे एक 9 PM मंडे टू फ्राइडे इसकी प्रिपरेशन के सेशंस रन किए जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस कोडिंग कंपटीशन के क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 13 नवंबर है और द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 16 नवंबर 2024। और बेनिफिट्स वी नो कि नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है, हमें टीम वर्क में काम करना आता है, आंसू भी नो कि हम किस तरह से टीम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपोजर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हेंस होती हैं, और डेफिनेटली हमारा जो पोर्टफोलियो बिल्ड होता है इस तरह के कॉम्पिटिशन से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार सेशन। और iCode पे रजिस्टर के लिए वी कैन गो थ्रू icode.gru/join, और हम इसका जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जो हमारा पेज है, वो भी हम विजिट कर सकते हैं। सो अगर हम बात करें आज के वेबिनार टाइटल की, तो वो है अ जर्नी फ्रॉम एनआईटी यूनिवर्सिटी टू सिलिकॉन पावर आर्किटेक्ट एट मेटा। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं सर मसूद सैयद हैं। और वेबिनार स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सर के बारे में, कि सर का जो MSc है, मास्टर्स है, वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डिमार्ट से है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और सर का जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो सर की जर्नी स्टार्ट होती है 2001 से एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। तो सर ने एज अ डिज़ाइन इंजीनियर डिफरेंट कंपनीज में काम किया, आवाज़ कंपनी, उफक टेक्नोलॉजीज और इंटेल कॉर्पोरेशन। देन ही ज्वाइन डिजिटेक इंजीनियरिंग एज अ टेक्निकल मैनेजर। देन ही वर्कड एज अ टेक्निकल मेंबर एट केयर PVT लिमिटेड। और सर का 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्टाफ डिज़ाइन इंजीनियर टू सीनियर टेक्निकल स्टाफ एट इंटेल कॉर्पोरेशन। और करंटली सर इज़ वर्किंग एट मेटा एज अ सिलिकॉन पावर आर्किटेक्ट। तो सर का हम वेलकम करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो इट हैज़ बीन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हियर। तो मैं यस, सो लेट्स प्लीज़ वेलकम टू ज्वाइन सर मसूद सैयद। मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे ऑफ करती हूँ। सो यस सर, हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सर मसूद। थैंक यू मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ठीक है, मेरा नाम वालेकुम सलाम मसूद सर। है। मेरा नाम मसूद है। Have you now you got my introduction? I don't need to say anything. Let's jump to the journey. इसका जो मकसद है बेसिकली आपको ये बताना कि what I have done and what different difficulties, जो different मुश्किलात हैं जो ओवरकम की गई हैं, एंड how I become here, कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। Right, let me share my screen. Okay, you can see it. Yes, sir. Okay. What's my background? Right, मैं कराची के अंदर born and brought up, पैदा वहीं पे हुआ हूँ, पला बड़ा वहीं पे हूँ। ठीक है। आई क्या कहना चाहिए कि फादर की जो एजुकेशन थी 8वीं तक थी, मदर की एजुकेशन 5वीं तक थी। राइट, सो नॉट अ थिंग के आई डो नॉट, मैं गोल्डन स्पून लेके बॉर्न नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, मेरी 5 बड़ी सिस्टर्स हैं। राइट, आई हैव 5 बाजियाँ। राइट, सभी की सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 2 केमिस्ट्री में है, एक फिजिक्स में है, एक अप्लाइड फिजिक्स में है, और आखिर माइक्रोबायोलॉजी में है। इस पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मेरी मदर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी कि हम पढ़ नहीं सके तो हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। राइट, मुझे क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली है फ्रॉम पहली क्लास से 12वीं क्लास तक। कोई किसी इंस्टीट्यूशन की शक्ल नहीं देखी, जो पढ़ाया इन्हीं पाँचों ने पढ़ाया है। ठीक है। और एडमिशन जो भी
क्या कहना चाहिए, आई गॉट इन टू NED 96 97 कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, राइट. आई वॉज नंबर 8 इन होल कराची फॉर माई जो मेरी 12th के एग्जाम्स है, मैं उसके अंदर 8 था अक्रॉस होल कराची, राइट. दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग. कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग मेरी पहली चॉइस थी और वो मेरी अपनी चॉइस थी. मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे फोर्सिंग किया, राइट. मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, जो आसपास के जितने ख़ानदान के लोग होते हैं, ठीक है, वो सारे थे कि मैकेनिकल इंजीनियर करनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर कभी भी भूखा नहीं मरता, ठीक है. सो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आई वेंट इनटू द कंप्यूटर इंजीनियरिंग. राइट, वन थिंग, अगर किसी को क्वेश्चन हो, प्लीज रेज अ हैंड एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम. ओके. NED University was a journey, right? It was a ride. एक तरह से ये कह लें कि बहुत सारे अप एंड डाउन थे. NED यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा मसला ये था कि जब हम 96 97 में एंटर हुए, देन हमें एनुअल सिस्टम था, ठीक है. टीचर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे पढ़ाने में, राइट. अगर आपको 10 टीचर्स अपने 10 सब्जेक्ट्स पूरे साल में कवर करने हैं, तो आपको 10 टीचर्स मिलेंगे. उसमें हार्डली 3 to 4 टीचर्स ऐसे होते थे जिसके अंदर आप क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते थे, ठीक है. बाकी सारे आपके आप क्लास से बाहर पढ़ते थे या बुक से पढ़ते थे, ठीक है. मैं लकी किस तरीके से रहा, यहाँ पे लक फैक्टर है, क्योंकि जो मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टीचर मिला, वो खुद NED से 2 साल पहले ग्रेजुएट करके गया था. उसने सारी मुश्किलात देखी हुई थी. उसने हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 6 महीने पढ़ाई है, बट उस 6 महीने के अंदर वो हमें उस लेवल तक लेके गया है सी लैंग्वेज के, जो कि ना हमने उससे पहले देखे थे, ना हमसे पहले किसी ने किए थे. हमने टेक्स्ट एडिटर, मल्टी डायमेंशनल एरेज, ये सारी चीज़ें करना तो नॉर्मल है. उससे हमसे सी लिब्स इम्प्लीमेंट करवाई हैं. हमने स्ट्रिंग डॉट लिब स्ट्रिंग डॉट एच पूरी इम्प्लीमेंट की थी. मेम डॉट एच पूरी इम्प्लीमेंट की थी. डबल पॉइंटर्स यूज़ किए थे. इवन के हमने स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शंस अपने हाथों से लिखे, राइट. फिर उसने हमें प्रोजेक्ट दिया था कि 1996 97 के अंदर 486 प्रोसेसर था इंटेल का. उसके साथ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट करने के लिए मैथ को प्रोसेसर एक अलग से चिप लगती थी, राइट. अब तो फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट आपको बिल्ट इन आता है प्रोसेसर्स के अंदर. तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी, उसके 4 एल्गोरिथम थे: मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. बट चारों के चारों आपने मैं हम लोगों ने फिक्स पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू सी में इम्प्लीमेंट किए थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर दिस प्रोजेक्ट इन द सेंस के हम उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ इसकी लॉजिक के बारे में सोचा करते थे कि अगर हमने बसों में ट्रैवल करना है, हम कहीं भी बैठे हुए हैं, हम दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड जहन के अंदर इसकी लॉजिक ही चल रही होती थी, राइट. इस हद तक हमने सी में काम किया. फिर हम जब वेवलॉग के अंदर आए, वेवलॉग शायद लेट मी टेल यू थिंक, जो हम डिजिटल डिज़ाइन करते हैं, चिप डिज़ाइन जो हमने करनी है, ठीक है, उसके लिए जो लैंग्वेज लिखी जाती है, हम डायरेक्ट ट्रांजिस्टर्स इंप्लीमेंट नहीं करते, राइट. हम गेट्स इंप्लीमेंट करते हैं. गेट्स के अंदर जो फंक्शनैलिटीज लिखी जाती है, वो वेवलॉग HDL के अंदर लिखी जाती है. दिस इज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, राइट. इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें भी प्रोफेसर ने फोर्स किया, राइट. 3rd ईयर के अंदर जब हम थे कि चिप डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एप्लीकेबल है, यू गाइस शुड लर्न दिस थिंग. उसने हमारे लिए कोर्स अरेंज किया, जैसे आप लोग के लिए आई कोड ग्रू कर रहा है. एक कोर्स था, 30 लोग थे, फ्री ऑफ कॉस्ट था, बट कंडीशन ये थी कि एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स होंगे, दूसरी क्लास में 15 स्टूडेंट्स होंगे, और फिर उन स्टूडेंट्स से एक दूसरे को पढ़ाना होगा. दैट्स हाउ वी लर्न द वेरिलॉग HDL. बट फिर हमने क्या किया, ठीक है, रिसोर्सेज थे नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई FPGA बोर्ड नहीं था, कोई लैब नहीं थी, कोई लैंग्वेज नहीं थी, राइट. हमने अल्टायरा से कांटेक्ट किया ऑन आवर ओन. हमने अल्टायरा की वेबसाइट पे देखा कि उनकी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स क्या हैं, राइट. हमने उससे लाइसेंस क्रिएट किया, राइट. हमने FPGA बोर्ड्स बनवाए फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्लैक्स 10 के उस टाइम पे उनका FPGA था, और फिर हमने इन FPGA बोर्ड्स को इंटरनली यूज़ किया, और उसकी बेसिस के ऊपर 1394
जिससे कि यूएसबी होती है, इंटेल ने उस टाइम के ऊपर 1394 फाइव बस इंट्रोड्यूस की थी, सीरियल बस थी, राइट। उसका लिंक लेयर कंट्रोल हमने डिज़ाइन किया था। हमें क्या हेल्प हुई थी इसके अंदर, चूंकि नया प्रोटोकॉल था, हमारे पास बुक्स नहीं थी। हमें यूएस के अंदर एक साहब होते थे, वो हमारे मेंटर भी थे, राइट। सिमिलरली आई कोड गो कॉन्सेप्ट, राइट। उन्होंने वहाँ से हमें बुक भिजवाई है, हमने उसकी फ़ोटो, उन्होंने हमें वन बुक भिजवाई, जितने हमारे टीम मेंबर्स थे हमने उसकी फ़ोटो कॉपी करवाई, राइट, एंड देन वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर, राइट। विद द हाइट वी रोट द रिसर्च पेपर, राइट, ऑन दैट थिंग। सो एनडी के अंदर या जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो बहुत हाई रिसोर्सेज के साथ हो, राइट। यू कैन mold, you can turn those events in your favor, right? आप ये देखें कि आपके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं, एंड देन वर्क विद अदर पीपल कि और कौन सी रिसोर्सेस अवेलेबल हो सकती है, कहाँ हेल्प हो सकती है। आई कोड गो इज अ रियली नाइस प्लेटफॉर्म, व्हेन आई लुक इनटू इट आई लाइक दिस one thing I learned in NID and that basically helped me through my whole life। जो हमें 6 टीचर्स बुरे मिलते थे, 4 टीचर्स अच्छे मिलते थे, उनकी वजह से वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम बुक्स। कि हम ये कहते थे कि हमें टीचर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये बता दो कि कौन सी बुक अच्छी है। इफ़ यू गॉट अ गुड बुक वी स्टार्ट learning on that thing, and this is still applied till this date, right? I look for the books, I do not look for the courses, I rely on the books, I go through the books, I taught myself, right? So just self-taught skills, if you develop in your life, it will help you at every point of your life। NID University engineer बन गए, right? Tech ladder, first tech jobs, right? Same thing, NID के अंदर I learned C language, I learned Verilog HDL, right? First job मिली Microsoft Tech Institute के अंदर as an instructor for Java and Windows, right? Zero background, got the book, start teaching, right? 3 months did job. My friend went to Islamabad, joined Enabling Technologies, or as California counterpart was called Avaz Network. So जब LinkedIn प्रोफाइल के ऊपर जब मैं डालता हूँ तो आवाज नेटवर्क्स की बात करता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में किसी से बात करता हूँ then पाकिस्तान फेस वाज Enabling Technology। सिर्फ एक टोटल 2 कंपनीज थी पाकिस्तान के अंदर, राइट। एंडोलॉजिक थी, राइट, और इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज थी, दोनों इस्लामाबाद में थी, जो कि चिप डिज़ाइन पे काम कर रही थी, राइट। मेरा थीसिस, मेरा बैचलर प्रोजेक्ट चिप डिज़ाइन पे था, मैंने 1.5 साल चिप डिज़ाइन पे काम किया था, मैंने चिप डिज़ाइन में ही काम करना था, मैंने अपनी फील्ड चेंज नहीं की। व्हाट आई डिड कि मैंने अपनी करंट जॉब जो कि माइक्रोसॉफ्ट टेक स्टेटस था, आई टुक अ ब्रेक ऑफ मंथ, right, against all odds, I put my job on the table, कि if they fire me I am okay। I took a bus, went to Islamabad, from Karachi to Islamabad, right, or took a train, I didn't even forgot, right। uh, Again, ask my friend to arrange my interview, right। मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं था, मेरे दोस्त ने अपने बॉस से बात की, मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ है जुलाई जून के एंड में, एंड आई वॉज देयर ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मेरे पास 1 महीना था, मेरा दोस्त चला जाता था, मैं उसका हॉस्टल के अंदर उसका रूम शेयर कर रहा था, एंड आई सिंपल रीड बुक्स फॉर द इंटरव्यू। आई पुट माई होल मंथ नथिंग एल्स, रीडिंग books and prepare myself for interview, right? I went through every single concept of digital design, whatever the books that they are using in that company Enabling Technology, I read through it to my friend, went into the interview, and I thought that okay, I am the awesome person, I know everything, मुझे सब कुछ आता है, right, I will ace this interview, right। मेरे 4 इंटरव्यूज, I survived 3। चौथा इंटरव्यू डॉक्टर शुएब के साथ था, आई थिंक एवरीबडी नोज डॉक्टर शुएब है, राइट। ये डॉक्टर शुएब की कंपनी थी। डॉक्टर शुएब ने मुझसे 4 सवाल पूछे, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं आता था, बट मैंने ये किया था, मैंने उनसे एंड पे कहा, मैंने कहा सर मेरा इंटरव्यू का तो जो हो सो हो,
बड़ी चायों के चायों सवाल टेक्निकली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इनके जवाब चाहिए. He told me all the answers. Then I get back and then I got to know that I got a job, right? पहली जॉब थी, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, राइट. पैशन इज अ वेरी क्वेश्चन मार्क टर्म, राइट. हमारे वर्किंग आवर्स चेंज हो गए. आई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम 11 AM to 3 AM, स्ट्रेट अक्रॉस, राइट. 3 बजे घर जाते थे क्योंकि इस्लामाबाद में अकेला था, राइट. 3 बजे घर जाते थे, सो के उठते लेट थे, 10 बजे 11 बजे तक पहुंचते थे, राइट. टारगेट चिप डिज़ाइन था, एंड आई वर्क ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ओवर देयर, इन द सेंस के मैंने कोड लिखा है, मैंने कोड डिबग किया है, मैंने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, मैंने सिंथेसिस लर्न की है, ठीक है, मैंने फ्रंट एंड डिज़ाइन किया है, मैंने वैलिडेशन की है, राइट. आई इवन डिड द टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एज वेल, कि जो उन्होंने वॉइस ओवर आईपी के टेलीफोन एप्लीकेशन बनाई हुई थी, मैंने उसकी टेस्टिंग तक की है. द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट टच वाज अ वेब डिज़ाइन, राइट, एंड software development. I didn't do that then, right? फिर you have seen it out that the working hours was so skewed कि जो working hours थे वो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे. Management was not happy and they transferred me to a very different role, right? I told you that as a tester, as an application tester, and I said fine. Then they need me again, and they want to make a processor for IP security. So IP security का जो processor है, we want to do the uh, you can say all the algorithm that is used for privacy and security thing. We want to implement the SHA-256 and SHA-512. We want to use the encryption engine of AES 128. We want to implement the MD55, and we want to implement the key encryption as well, right? सारी चीज़ों के ना डिवाइड हुआ था. I got AES 128, right? मेरा task lead आया है. I know that I was installing Linux on my system, right? Linux installation उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती थी हमारे लिए. मेरा टास्क लीड आया है, मुझसे बोलता है कि Sood, what are you doing? I said, I'm just enjoying my life. कहता है ओके, लेट्स डू दिस थिंग. कहता है ये 30 पेज का एल्गोरिथम है, राइट. उसके हाथ में प्रिंट आउट था, AES 128, और कहता है मुझे कुछ ही नहीं आता इसके बारे में. मैंने कहा ठीक है. कहता है हमने इसे पढ़ना है, इसे समझना है, इसे इम्प्लीमेंट करना है और इसे मंडे मॉर्निंग तक डिलीवर करना है, क्योंकि हमारे US क्लाइंट के साथ मीटिंग है और इसे FPGA पे चलना चाहिए. एंड वी जंप फ्रॉम द क्लिफ. We put our 36 to 48 hours. We did not sleep. We, both of us, right? We make it work on an FPGA. That was a success point, right? So what I learned mainly from my life side perspective, that you need to jump from the cliff. Sometime आपको ऐसे decisions लेना पड़ते हैं जो कि क्या कहना चाहिए कि ऑन वर्ल्ड ग्राउंड्स ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स इज ग्रे, काफी ब्लैक एरिया है, आगे कुछ नहीं दिख रहा, राइट. बट यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ऑन योर कैपेबिलिटीज, राइट. अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं है, डोंट जंप, राइट. जब तक खुद पे ट्रस्ट ना हो, डू नॉट जंप. दैट इज द केस, यू विल फॉल, राइट. फर्स्ट थिंग इज सेल्फ ट्रस्ट, कि you can do, you can deliver, it is doable, and do the calculated risks, right? So these are the points that जो मैंने, when I took off my job and get the interview, right, and then took straight 36 to 48 hours कि अगर कोई मुश्किल काम है, I did not say no. That was a learning point. I did a lot of soft skills, right? I put my master's application while sitting in enabling technologies. I applied over there. 2001, 9/11 हो चुका था, US restricted था. So we applied in all European institution, right?
background, I still call myself a middle class family, right? So we were looking forward कि कहाँ पे हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है या कहाँ पे हमारी फीस वेव हो सकती है, and where the minimal expenses we can do that thing, right? So Europe was a perfect candidate for that one, right? We hit another thing in enabling technology, our first layoff, right? Company got into trouble due to 9/11 after 2 years. Funding खत्म हो गई थी, startup था, right? They lay off half of the company. I was one of them, right? They make Care Private Limited after that, Center of Advanced Research Engineering, after laying off people, and they put all those layoff people as a part of the Center of Advanced Research Engineering. They said it out that you will not get any further benefits. Whatever the pay you are getting is good, right? But हमने 1 से 2 साल तक survive करना है. I took a job in Karachi, and then I come back for 6 months. I was waiting for my master's one, right? And that company was Ufuk Technologies, right? I didn't do much engineering over there. वहाँ पे ज़्यादातर काम ये था कि how you can build the software using third-party IPs, right? Denmark, higher studies, right? This is another phase of the life, right? What I learned it out that I took a loan, right, to fly to Denmark, right? And I returned the loan in first year, right? Because I got a job over there, right? But the good part is that I was working for last 3 or 4 years in digital technology, and I was completely fed up. क्योंकि मैंने क्लीन रूम के अंदर काम करना था, मैंने फैब्रिकेशन पे काम करना था. Then I selected the Denmark Technical University where I got the admission, and I was happy क्योंकि इंटेल जो कि उस टाइम पे चिप डिज़ाइन में सबसे बड़ा नाम था, इट वाज इन डेनमार्क. दैट वाज माय गोल, राइट? मैंने वहाँ पे क्या क्या किया, मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की, राइट? बिकॉज आई वांट टू एंजॉय एवरी सिंगल साइड ऑफ माय मास्टर्स. Whenever you guys are going to the masters, don't look for your job, right? Look for your things that what you want to do, right? That is very important. अगर मास्टर स्टडीज के अंदर सिर्फ जॉब के लिए पढ़ रहे हो, आप कभी इंजॉय नहीं करोगे. और जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे, आप उसके अंदर क्या कहना चाहिए, यू कैन नॉट, आप अपना बेस्ट ब्रिंग आउट नहीं कर सकते, राइट? तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने जॉब कहाँ करनी है, पाकिस्तान में ये अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है, राइट? So I took my passion on it, and then I started with nanotechnology, right? I worked in a clean room. I did a 10 nanometer fabrication, right? I worked on the wafers by my hand, right? I have handled a 4-inch wafers in my hand by myself, right? I studied the background of semiconductor. I studied carbon nanotubes. I don't know how many people of you have heard about the carbon nanotubes. Carbon nanotubes are the most advanced research in materials. मटेरियल्स के अंदर सबसे एडवांस रिसर्च जो आई थिंक आप लोग जो मेटलर्जी अगर कोई कर रहा है, सो मेटलर्जी के जो लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ये मटेरियल साइड, राइट? कंप्लीटली डिफरेंट. आप डिजिटल डिज़ाइन कर रहे हैं, एंड आई वाज लुकिंग इनटू द मेटलर्जी और मटेरियल साइड ऑफ इट, राइट? Then I start with my electronics, second part of it as a RFIC design. And जब आप RF frequencies या microwave frequencies पे काम कर रहे होते हैं, then you basically work on the receiver side of it. So I first designed the low noise amplifier, right, with uh, silicon germanium, you can say that out technology, right? 2.4 gigahertz. Then we work on the broadband IC design, millimeter. So this is that how you can provide the clock for the high bandwidth circuits, right? 2.4 gigahertz was a very big one. So broadband आप इस तरीके से कह लो कि जितनी आप वायरलेस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो स्टार्ट हुई थी वो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड से यूज हुई थी.
तो उसका जो डिजिटल पार्ट है उसके लिए जो क्लॉक चाहिए होती है दैट शुड रन ऑन 2.4 गीगाहर्ट्ज, राइट? अब तो हम 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर बात कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग बियॉन्ड इट, राइट? Then microwave IC design, we work on the digital TVs, right? So the digital video broadcast, 11.7 gigahertz transceiver design, everything from analog part only, right? From the mixers, couplers, distributors, every single part of it, right? I did not design filters. मुझे filter design करना नहीं आते, right? मैंने जब भी कोशिश की है मैं हमेशा फेल हुआ, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब चीज़ सक्सेसफुल कर रहा हूँ, फेलियर भी बहुत है, राइट? um, एक चीज़ जो कि मैंने लर्न की है और जो मैंने यहाँ पे भी लैकिंग देखी है व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू द डिफरेंट सीरीज, कि हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं, हम लोग जब कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं टीचर हमें क्या बता रहा है, हम उसको प्रैक्टिकली कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखो, इवन अगर आपका ऊपर है खाना निकाल में। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो, एनी सब्जेक्ट, राइट, except the mechanical and the surveying thing, right? Because we did that as well, right? So अगर आप कंप्यूटर साइड पे हो या इलेक्ट्रॉनिक साइड पे हो या इलेक्ट्रिकल साइड पे हो, राइट, अब मार्केट और अब चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, यू कैन डू समथिंग प्रैक्टिकल। आप हमेशा कोई ना कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट ज़रूर करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे, ठीक है, आ, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। आप हमेशा अपने एक्सपीरियंस के ऊपर वेट करोगे कि आपको इंटर्नशिप मिलती है, तब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, सही है। बट अगर आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते रहोगे, जब आप सीवी के ऊपर लाओगे, राइट, आपको वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े दिखाई देंगे। और जब आप किसी के पास जाओगे तो आपको ये पता होगा कि जो आपने स्टडीज़ की आपने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। एंड आपको ज़रूरी नहीं कि आप A380 जहाज ही बनाओ या उसका कॉकपिट ही डिजाइन करो, ठीक है। उस एक सिंपल बटन बनाना भी एक काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि आपके लर्निंग का बहुत ज़्यादा होता है। जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो आपके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं। एंड टू योर सरप्राइज, ये जो चारों के चारों प्रोजेक्ट हैं ये मेरे सब्जेक्ट प्रोजेक्ट है, दे आर नॉट माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, राइट? दे डिडंट डू एनीथिंग विद द फाइनल, कि मैंने फाइनल थीसिस क्या किया है और मैंने रिसर्च पेपर में क्या किया है। ये चारों के चारों प्रोजेक्ट थे जो कि सिर्फ और सिर्फ कोर्स का पार्ट थे, ठीक है, ये था फन साइड। if you are going to Europe, if you are going for the studies, if you are going even to US or anywhere, even if you are going to the other cities of Pakistan, uh, do tourism, right? Education, जब आप स्टूडेंट होते हो एवरीथिंग इज चीप, राइट? कोई एक्सपेंसिव नहीं होती, जब तक आप जॉब करना स्टार्ट नहीं करते कोई चीज़ एक्सपेंसिव नहीं होती आपके लिए, ठीक है। मैं 3 साल रहा हूँ डेनमार्क के अंदर, मैं पाकिस्तान वापस नहीं आया, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपनी अम्मा अब्बा से मोहब्बत नहीं करता था, सही है, बट यूरोप इज सो ब्यूटीफुल। तो मैंने तकरीबन हाफ ऑफ द यूरोप विजिट किया है, जब भी छुट्टी होती थी कहीं ना कहीं चले जाते थे, नॉट विद द सेम पीपल, नॉट विद द सेम ग्रुप, ठीक है। मैंने वियना अकेले घूमा है पूरे 7 दिन, राइट? आई टुक अ कोर्स ओवर देयर एंड देन आई विजिट वियना फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट, या मुझे अब तक याद है उसकी शॉप्स, राइट। और यूरोप के साथ एक और काम जो किया था वो ये था, दिस इज माई साइड प्रोजेक्ट, दिस इज आई टॉक टू प्रोफेसर कि मेरे पास अपने कोर्स वर्क के अलावा भी काफ़ी बैंडविथ है, ठीक है, और मैं कुछ मजीद करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि यार ठीक है, डेटा अवेलेबल है, सिलिकॉन जर्मेनियम हेट्रो जंक्शन बाइपोलर ट्रांजिस्टर, राइट, इसका डेटा मौजूद है, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी एनालिसिस करनी है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, तुम कर सकते हो तो बता दो, ये है डेटा। इसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, राइट। आई स्टार्ट लुकिंग इनटू इट, मुझे पता चला कि मुझे इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए मैथमेटिका सीखना पड़ेगा। अगेन एक्वायर्ड स्किल, राइट, टुक अ बुक,
or took a user guide and learn from there. I did that thing. I put up the IEEE की जो microwave conference है, we published a paper over there, right? It was in Paris. We presented the paper. It was a poster paper, not as a present paper, but it was a poster paper. It was accepted. And the person who worked on it was really surprised that I did it in my master's because ये उसका PhD thesis था. And जो पेपर को जो रिसीव हुए थे, they asked me to write the journal paper, but मेरे पास टाइम नहीं था. I need to finish my master's and I go back. Right? One more thing that I did in my master's that was different from other people, that I said it out कि यार मैं simple professor के साथ simple thesis नहीं लिखूंगा. Alright, I will work with a company. I will do my master thesis with some company. Why? क्योंकि मुझे industry experience चाहिए था. I delayed my masters by 6 months. मेरा masters 2 years पे finish होना था. I took 2.5 years. राइट क्योंकि मैंने डेनमार्क के अंदर काम करा था. बट उसके अंदर भी लाइफ लेसन लर्न है. इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने अप्लाई किया है अक्रॉस स्वीडन एंड डेनमार्क, मैंने 100 पोजीशन पर अप्लाई किया था. मेरे फ्रेंड ने 200 पोजीशन पे अप्लाई किया था. एंड बिलीव मी, हम दोनों के सब कुछ रिजेक्ट हो गया था. ठीक है. मेरे दोस्त को शायद आप लोग जानते हो, आई डोंट नो, डॉक्टर असलान जावेद फ्रॉम ही इज नाउ इन Bahia. Right? He's running 2 startups. He's running a startup over there as well in Karachi. Right? Finally, मेरे प्रोफेसर ने, I talked to the professor and professor से मैंने बोला कि यार थीसिस करना है इंडस्ट्री में, what should I do? उसने कहा फलाने प्रोफेसर के पास जाओ, उससे बात करो, हो जाएगा. That's how I got into Intel Denmark. Right? I did my 6 months over there. I wrote my thesis, and this was my journey in the studies. So when you are going for the masters, right, you are basically looking for so many things. आप ये देख रहे हो कि आपने मास्टर्स कैसे एंजॉय करना, ठीक है, आपने एक्सपेंसेस अपने कैसे कवर करने. आई वर्कड 16 to 24 hours per week to earn my expenses, right? आपने टूरिज्म क्या करना है, क्योंकि इफ यू वांट टू कीप योरसेल्फ अलाइव, राइट, ये बहुत ज़रूरी है. कैंपिंग करो अगर यूएस आ रहे हो, ठीक है, कैंपिंग करो, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर करो, रोड ट्रिप करो, डू वॉट एवर यू कैन डू. राइट. राइट. डू look for the extras, right? What extra you can do in your masters, how you can stood out in 100 people, right? कि अगर आपके साथ 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग वही सब्जेक्ट ले रहे हैं, राइट, आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं, जो कि जब आप, अगर वो 100 के 100 लोग एक ही जगह पर अप्लाई करते हैं आपका सीवी पिकअप पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपको ये चीज डे 1 पे सोचना होती है, लास्ट डे पे नहीं सोचना होता. अगर आपने अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है एंड ऑफ योर मास्टर्स और एंड ऑफ योर पीएचडी, राइट, या अगर आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जॉब करनी है जो कि आपका ड्रीम है, राइट, यू हैव टू, आपको उसके लिए पहले दिन से काम करना है. आपने अपनी सारी चीजें पहले दिन से उसके साथ अलाइन करनी है. आपको 2 साल की प्लानिंग करनी है, राइट, या 2.5 साल, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है. पहला फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉयमेंट का होता है. इसीलिए मैं कह रहा था कि व्हेन आई डिड द यूरोप विजिटिंग, दैट वाज माय कूल ऑफ पॉइंट, ठीक है, कि जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, काम करते करते सोते सोते थक जाते थे, then go for the visit, go for the vacation. That will a very cool part of it. Any question, anything? Studies, return to Pakistan, love for Karachi, right? After doing 3 years in Denmark, मैं, you have, Safala, you have a question. I can take questions. श्योर सर. सर सैफुल्लाह अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं.
बेसिकली माय नेम इज सफीउल्लाह सलीम। तो सर माय क्वेश्चन इज कि जैसे आपने कहा ना कि अगर आप वर्क करते हैं तो आपको अगर लाइक जैसे आपने महसूस किया कि आप बर्डन फील कर रहे हैं तो आपको वेकेशन पे या टूर पे जाना चाहिए। बट हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको अगर आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करेंगे तो आपके लिए इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो यहाँ पे हमें कैसे करना चाहिए इस तरह मैनेज इस चीज़ को? जबरदस्त। अच्छा जी, वीक में हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7? यस सर, 7 days इन अ वीक। कितने दिन काम करते हो? सर ऑलमोस्ट जैसे अभी हम अभी वर्किंग कह लें कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं, और सैटरडे में अगर असाइनमेंट वगैरह या डे टू डे कोई ऐसे असाइनमेंट डेली बेसिस पे भी होती है। तो तो भाई, आपको 5 दिन सोने को कौन बोल रहा है? मत सो। 23 आवर्स काम करो, 24 आवर्स काम करो, 36 आवर्स काम करो, 48 आवर्स काम करो, बट जो करना है, जो भी करना, अगर एग्जाम्स नहीं है, एग्जाम्स का स्केड्यूल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? एग्जाम्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। जो करना है 5 दिन में करो, या 6 दिन में करो, 7वें दिन ना करो। आप अगर अपने लिए एक दिन नहीं निकालोगे जिसके अंदर आप दोस्तों के साथ बैठो, कंप्यूटर गेम्स खेलो, ठीक है, शॉपिंग करो, कुकिंग करो, राइट, फिल्में देखो। मैं फिल्में बहुत देखता था डेनमार्क के अंदर, सही है, फिल्में देखो, राइट, बाहर चले जाओ, बट एक दिन आपका अपना होना चाहिए। हमारा बात वक्त हाल ये होता था डेनमार्क के अंदर कि हम लोग, आई नो, आई हैव वर्क 3 days स्ट्रेट, बट जो तीसरे दिन के बाद का हाल था वो हाल ये था कि मैं सोफे पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेटा हूं, मैं फिर 17 घंटे के बाद उठाऊं। तो जो पांच हम गलती ये करते हैं कि हम कहते हैं कि यार हमने सैटरडे संडे भी काम करना है, हम पहले ही प्लान करके बैठे होते हैं। तो अगर तुम अपने, इफ यू लुक इनटू योर रूटीन ऑफ 5 days, आप वहां पे बहुत ज्यादा टाइम जाया कर रहे होते, ठीक है? आप पूरे 5 दिन अपनी स्टडीज पे नहीं लगाते, जो छोटे छोटे काम आप जाया कर रहे होते हो वो आप एक्यूमुलेट करो वीकेंड के ऊपर, एंड देन यू कैन डू द वीकेंड थिंग। Yeah. Did I answer your question? श्योर, थैंक यू सो मच। Thank you. All right. Next. Sir, move to the next question. So, Sir Zulfikar Ali, you can ask. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Walaikum salam. थैंक यू सो मच, सच एन इंस्पायरिंग जर्नी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आपने बहुत से रास्ते इख्तियार किए एंड यू अचीव दिस टारगेट। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप, अगर आपको दोबारा चांस मिले और आप दोबारा पैदा हों और इसी पाथ पे जाएं, तो वो क्या स्पेसिफिक पाथ आप समराइज करेंगे कि ये काम करने, अगर आप हमें एडवाइस करेंगे कि मैंने ये काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, अगर मैं ये करता तो ये ज्यादा शॉर्टकट वे भी, शॉर्टकट नहीं जो कि हम साइंस में बोलते हैं, तो वो आप उसको बड़े स्मार्ट वे में अचीव कर सकते थे, तो वो इस तरह की आप एडवाइस करें तो um, आई विल बी थैंकफुल टू। यार लोग मारेंगे यार बाद में, मेरे जितने दोस्त हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सवाल के जवाब पे। ओके, अच्छा जी, ये क्या मैं चेंज करना चाहूंगा? मैं प्रोग्रामर नहीं बनना चाहूंगा, ठीक है? आई विल मिक्स माई प्रोग्रामिंग स्किल्स विद मैनेजमेंट। जो चीज़ें चेंज करना चाहूंगा, मैं ये चेंज करना चाहूंगा कि मैंने एनईडी के एंड पे सोचा था मैंने जॉब करनी है। मैं एनईडी के अंदर, मैं ये जब भी मैं पढ़ूंगा एनईडी से ही, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ना, ठीक है? बट एनईडी के एंड पे जो मैं सोचूंगा ये क्या है, मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, मैंने उसके लिए क्या करना है। मैं अपने मास्टर्स पीएचडी का नहीं सोचूंगा, मैं सिंपल ये सोचूंगा कि अगर मैंने कंपनी खोलनी है तो मैंने क्या करना है, और अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनना है तब मैंने क्या करना। इट डज नॉट रिक्वायर कि आप एमबीए करो, नो, मैं ये नहीं कह रहा आपसे, ठीक है? बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आप कर सकते हो। आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, आपको जो टेक्निकल बैकग्राउंड है, दैट्स अ प्लस फॉर दैट।
मैं अपने बेटे को भी यही एडवाइस करता हूँ, क्योंकि प्रोग्रामर का जो पाथ है, ठीक है, बहुत टीडियस है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर्ड है उसको आगे बढ़ने के लिए। आई सिंपली गॉट लकी इन माई लाइफ, मैं आपको ये बोलूँगा। Did I answer your question? थैंक यू सो मच। एंड वन क्वेश्चन जो भी मैंने रिसेंटली मुझे उसका मालूम हुआ, अभी आपने उसको मेंशन भी किया कि आपको इफ यू डूइंग सम जॉब इन सम ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आगे जाने के टैक्टिस सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को हार्ड करते जाए। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं उनका भी बहुत रोल होता है। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? नो, मैनेजमेंट रोल देखो, आप या वन पीस ऑफ एडवाइस कि आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना होता है। इट्स एवरीवेयर, इट्स इज द बॉटम लाइन ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू डू द हार्डवर्क। बट आप ये देखो कि जो भी आपको टास्क मिला है, आप उसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो, आप उसके अंदर मजीद क्या चीज़ें ला सकते हो, राइट? दिस विल बेसिकली प्रोवाइड यू एन एज कि आप जब उस टास्क को लेकर जाते हो तो आप अपने मैनेजर से या जो भी आप काम कर रहे हो, यू कैन डू अ लॉट मोर अदर थिंग। अगर आप मैनेजमेंट व्यू अपने सामने रखोगे तो आपको पता होगा कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो और आपको कहाँ पे क्या बोलना है, राइट? फर्स्ट थिंग कि यू शुड लिसन मोर देन स्पीक, एंड यू शुड, जब आप बोल रहे हो तो आपको ये होना चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे जब आप बोलो तो लोग आपको सुने। उसके लिए आपको टेक्निकल डेप्थ चाहिए, टेक्निकली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट हाँ, उसके लिए मैनेजरियल स्किल्स चाहिए होती हैं। सियासत ना करो, नो पॉलिटिक्स। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी भी है तो सिर्फ इसलिए करो कि आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो। डोंट डू पॉलिटिक्स फॉर दिस, डोंट ट्राई टू go by putting your foot on others shoulder, very dirty thing, yeah. All right. So, sir, could we take 2 to 3 more questions क्योंकि काफी ज्यादा से हैंड रेज हैं। Sure. All right. सर अदील, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. First of all, a very valuable session. My question is, sir, कि मैं देख रहा हूँ अपने एकेडेमिया एंड जो इंडस्ट्री पेज हैं दोनों को पैरेलल में रखा है, एंड यू इवन पब्लिश रिसर्च पेपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन बैचलर्स, फिर आपने लाइक 16 आवर्स जॉब भी किया एंड देन यू वेंट फॉर मास्टर्स। तो आई जस्ट वांट टू नो कि इसके पीछे का कोई खास कोई स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस थी कि आप इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लेके एंड फिर आप मास्टर्स के लिए गए, आपने रिसर्च साइड को भी एक्सप्लोर किया है, आपने इंडस्ट्री साइड को भी देखा है। बिकॉज आई वांट कि मैंने अभी तक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ही हासिल किया है एंड आई एम जस्ट एकेडेमिया जो साइड है मुझे उससे ऐसे ही थोड़ी सी फेयर होता है कि रिसर्च साइड इज़ नॉट फॉर मी, बट द थिंग इज लाइक टू मेक माई वे आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर scholarships और समथिंग, तो इफ आई हैड टू एक्सप्लोर आई विल एक्सप्लोर दैट। बट आई वांट कि आपका इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था एंड हाउ वी कैन मैनेज दीज बोथ, इंडस्ट्री को भी और एकेडेमिया को भी, जिस तरह आगे फिर आपने एज अ प्रोफेसर भी काम किया। um, Yeah. bluntly speaking, when I did my, जब मैंने अपना एलडी फिनिश किया है, I don't have the money to go to masters, मुझे अपनी मनी अर्न करना थी, राइट? तो मुझे जॉब ढूंढना थी, सो जॉब वाज माय थिंग, राइट? प्लस चीज़ें सामने आती गई एंड आई स्टार्ट जंपिंग ऑन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज काइंड ऑफ थिंग। प्लस ये कि मास्टर्स के बाद क्यों जॉब की, पीएचडी क्यों नहीं किया, मैं पढ़ते पढ़ते थक चुका था। मुझे रात में भी खौफ आता था कि यार मेरा एग्ज़ाम हो रहा है और मुझे एग्ज़ाम में उर्दू का पेपर, मुझे कुछ याद नहीं है, आसपास में बैठे हुए सारे लोग कर रहे हैं, फिर याद आता तो भाई मास्टर्स हो चुका है, घर जाने का टाइम है। तो आई वॉज रियली फाइड अप, आई गॉट अ पीएचडी ऑफर फ्रॉम TU Darmstadt, right? They were making on a 89 gigahertz satellite, right? They offered me the position. This professor said कि मुझे अपने papers person ही मुझे mail कर दो and I will do all the admission process work. मैंने उसे मना कर दिया था कि no, I don't want, I want to work in Pakistan and I want to go back and I want to do job, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थक चुका था।
That's the case. So it's not a planned thing. It happens with life. Sometimes life factors also come into the play. Next question. सर Yes. सर जब मैं आई एम करंटली इन द बैचलर्स राइट नाउ, तो सर जब मैं देखता हूँ कि मैं साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट के इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह या कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, तो सर मैं देखता हूँ कि या तो उस पर कुछ रिसर्च पेपर पहले से पब्लिश हो चुका है या उस पर जो है कोई स्टार्टअप ऑलरेडी काम कर रहा है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपने आइडियाज़ बनाते हैं या कुछ फॉर एग्जांपल स्टार्टअप के लिए या कुछ और के लिए, ताकि हमारा जो यूनिवर्सिटी में साथ स्टडीज़ के साथ साथ सर हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हों जो कि ऑन रनिंग भी हों, ठीक है, तो सर उसके लिए फॉर एग्जांपल इन द एआई या इन द डाटा साइंस या मशीन लर्निंग के लिए, तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि हमें किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए? इट डजेंट मैटर कि यार लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जब I mean a simple example. Hello World has been implemented by the million people in the coding environment. Why you write Hello World? You want to learn. Sometimes आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने लर्न करना होता है। और वो जो लर्निंग स्किल्स होती हैं, वो लर्निंग स्किल्स बेसिकली आपको एज पे लेके जाती हैं कि फ्रैंकली एंड ब्लंटली स्पीकिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, राइट। क्योंकि जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वो बड़ा क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर होता है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए जाते। बट जब हम उस रिसर्च, क्योंकि हमारी भी रिसर्च लैब्स है, मेटा रिसर्च लैब है, जब मेटा रिसर्च लैब का प्रोजेक्ट या इंटर रिसर्च लैब का जब प्रोजेक्ट हमारे पास आता था, तो हम हमेशा स्केप्टिकल होते थे कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। बट नो वन इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम द रिसर्च। 15 नैनोमीटर का जो ट्रांजिस्टर है, राइट, 15 नैनोमीटर या 30, या 15 nanometer, right? 14 nanometer process was launched by Intel in 2010, but the transistor was made in the lab in 2004. So there is a large gap. अगर कोई implement भी कर, अगर कोई आपका कुलीग, अगर कोई आपका पड़ोसी भी उसको implement कर रहा है, don't hold yourself back, क्योंकि आपको अपने गोल्स डिफाइन करने कि आपने पैसा कमाना है या आपने लर्न करना है, राइट। अगर आपने कोई भी डीप टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, आप कभी भी मनी मॉडल में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट। सो यू हैव टू डू द प्रिपरेशन फर्स्ट बिफोर यू अपीयर इन एग्जाम्स, दैट्स द केस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जैसे कि आपका बैकग्राउंड पहले बैचलर कंप्यूटर साइंस के था, आपने आगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि फिजिक्स की एक मेजर ब्रांच है सर, आपने उसको चूज किया। तो सर आपने, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बैकग्राउंड बैचलर फिजिक्स के अंदर है और मैंने अब इधर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, मास्टर में एडमिशन नहीं लिया और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूएस में एडमिशन मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए। तो सर कैसे आपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया और प्रोजेक्ट के अंदर ये कितना बेनिफिशियल रहा, और सर इस लिहाज से मैंने अपनी अपनी फील्ड चूज करनी है नेक्स्ट, तो कैसे प्रोग्रामिंग की मदद से मैं आगे अपनी रिसर्च फील्ड चूज करूँ? जैसे अगर आपने सीएनटी का भी जिक्र किया है और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स नैनो मटीरियल मेरे ख्याल नैनो टेक्नोलॉजी चिप्स और जो क्वांटम की तरफ मेरे ख्याल आप थोड़ा सा गए हैं, तो काइंडली सर एलिबोरेट कर दें थोड़ा सा इस चीज़ को। मैंने क्वांटम टच ही किया, मेरा प्लान था क्वांटम टच करने का, भैया फिजिक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है क्वांटम के अंदर, ओके। Yeah, just to give you a very simple solid answer, right? One of my friend, right, who is working in Google at a senior managerial position in the software, right? He is handling Google apps, right? Google work apps. या वो बैचलर्स है मेटलर्जी के अंदर, और उसने फिर मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस के अंदर कोलोराडो यूनिवर्सिटी से, कोलोराडो बोल्डर से। सो इट डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन योर पैशन, व्हाट यू वांट टू डू। इट डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो। मेटलर्जी, मटेरियल साइंसेस का कोई ताल्लुक नहीं है कंप्यूटर साइंस से। He did computer science. Then he did masters and he did PhD in computer science.
and now he's in Google. Okay, sir. Thank you. Assalamu alaikum, sir. This is Syed Fasiuddin, and I am a recent graduate from NAD affiliated institute. So मैंने NAD alumni association का जो है वो नाम सुना है काफ़ी ज़्यादा, बट इससे इंटरेक्शन मेरा नहीं हो पाया. So can you tell कि NAD alumni association एज एन एनेडियन या फिर एज अ रिसेंट ग्रेजुएट मुझे फॉर माय गोल टू गेट इनटू एनी मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम ऑफ यूएसए कैसे हेल्प कर सकती है, या फिर हेल्प मैं किस तरीके से ले सकता हूँ इन लोगों से? Yeah, first you need to find out that what you want to do and where you want to apply, right? अगर आप किसी भी शख्स के पास जाओगे और कहोगे यार मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, anywhere in the world, right? सबसे पहले वो बंदा हमेशा पूछता है what you have done. So you have to do first 10 steps or first 5 steps by yourself, right? Right. आपको ये select करना होगा किस फील्ड में करना चाहते हो, उस फील्ड के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, वो फील्ड can you absorb the field, can you work in that thing, does it align with your passion, what you want to do, right? Again, say passion is a very loose word, right, that we use in the market a lot. Yeah, but uh, people will come and help. iCode Guru is one of the platform that where I see that out. Even the NAD alumni is somehow connect with them. NAD alumni is Koshish Foundation. Koshish Foundation support these things, but you need to do that thing. So in order to secure an admission, right, you have to work on your own. Funding and other things, people will come and help you, right? As far as the admission secure करने के लिए you need to write your statement of purpose. You need to put yourself on the table how you want to do and what different skills you can bring to the subject and how desperate you are, right? How you can make your stories. That you have to tell the people, doesn't matter what you have done, but you have to write the paper in a way that, hey, you are born to do this thing. So you need to secure the admission on your help. People will help you. People will सर guide, right? आई बिलीव आई हैव द पोटेंशियल और मैं एडमिशन क्रैक कर लूँगा. द थिंग हेयर इज द फंडिंग. अगर मैं एडमिशन क्रैक कर लेता हूँ तो क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि लाइक आई विल बी एबल टू गेट द फंडिंग? यार मैं आपको मेरे एडमिशन क्रैक करके एक यूनिवर्सिटी का नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटी का दे दूंगा. um ओके, वेरी केयरफुली स्पीकिंग, मुझे कल का नहीं पता यार कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा दुनिया में, ठीक है, 6 महीने बहुत दूर है. एडमिशन क्रैक करो. ऑलराइट सर, आई विल कांटेक्ट यू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा. स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है. मैं यहाँ सिलिकॉन वैली बे एरिया में होता हूँ. iCode गुरु की मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है और मसूद इज अ वेरी क्लोज, वेरी डियर फ्रेंड. सो थैंक यू मसूद भाई, आपने यहाँ सैटरडे की सुबह इतना टाइम निकाला. इट्स मोर देन एन आवर. आप इतना अच्छा आपने मोटिवेटिंग लेक्चर दिया जिससे तो हम भी मोटिवेट हो गए. स्टूडेंट्स तो जरूर मोटिवेट हुए होंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल दिस. हम काफी अरसे से बात कर रहे थे क्योंकि मसूद एग्जैक्टली. भाई हमारे साथ हैं. ही नोज iCode गुरु, इनको हमारी एक्टिविटीज का पता है. ही हैज बीन गाइडिंग थ्रू आउट. हम इनसे एडवाइसेस भी लेते रहते हैं एंड वी वर प्लानिंग कि ये कभी आएंगे. इट हैज टेकन सम टाइम बट फाइनली सर यू आर हियर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस एंड स्टूडेंट्स को गाइड करने का बहुत शुक्रिया आपका. सैटरडे की सुबह है, हर बंदे की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, but still taking out time, preparing and delivering this excellent webinar. Thank you very much, Masood bhai. Thank you. Thank you, sir. You're welcome.
Can I finish now this thing and then can I take all the questions at the end? Sure, sir. Okay, thank you. So return to Pakistan. Pakistan is still my love, right? Irrespective of all the politics and everything kind of thing, right? And I'm ready to jump to help Pakistan, right? In all sense, right? But in a very careful fashion, right? Returning to Pakistan, mother wahan the, father wahan the, right? I got engaged before going to Denmark. So first thing that I did when I landed in Pakistan, I got married, right? Then I joined the startup as a technical manager, Digitech Design. Digitech Design was a kind of a, you can say that out. It was not the body shop, right? But kind of a body shop. Because the person who was there got the project, send it to us, and we do that thing, right? And mainly just a job thing, right? I went to Islamabad. I left the company in 1 year. I joined Islamabad again. It's my old company, Care Private Limited, right? I I still feel bad in the sense that I did Arshad Riazuddin Saab. Arshad Riazuddin commit me for another company. I think it was Palm Chip, right? But when I landed in Islamabad, I went to Care Private Limited to meet Dr. Shoaib and Dr. Mohsen Ahmedullah. And Dr. Mohsen Ahmedullah said that कि यार हमें कांटे लगे हुए हैं यार हमारे पास आ जाएगा तूने इस्लामाबाद ही आना है. I joined them, right? Due to my old relationship, right? वहां पे क्या किया वहां पे बहुत कुछ किया वहां पे डीप पैकेट एनालिसिस की वहां पे मैक कंट्रोलर डिजाइन किया वहां पे आईपी लेयर डिजाइन की ठीक है डिप्लॉय की पीटीसीएल के अंदर वी पुट अप द 30 FPGA racks in the in तो आपका कैसा जा रहा है स्काउटिंग का जर्नी? Razwan, can you mute? Thank you. Um, right. I learned a lot about the network, right? How the network work. We were sitting on the Pakistan Pakistan broadband line. जो आपकी ocean से आ रही है, we sit directly on that one, right? We did a lot of things. We extract out the gray traffic, right? And it was a journey. It was a journey. I learned one thing. I learned a very interesting thing that reminds me, yeah, right? When I was debugging the FPGA in Islamabad in Pindi Exchange, right? Me and my assistant, my reportee was sitting, my team member was sitting with me, and we were literally, it was a day and we were unable to debug it out, right? At that point of a time, I asked Allah, help me out, fix it. My simple ask was fix it, right? And my back technical thing was saying, hey, I have deployed this chip. I have programmed this FPGA, right? Allah will not come, Nauzubillah. Allah will not come and correct the wires, right? How Allah will help me out? How Allah will fix it out? At that time, I learned one thing, and that's also the grace of Allah, right? That Allah will not fix the wire, but Allah will tell you which wire is faulty in that ocean. Allah will cut your debug time. And believe me, it happened. It happens, right? That day, I believe on Allah that even if a chip is fabricated, Allah will help if you ask, right? That's one of the learning from this Islamabad journey, right? Then all those Musharraf Dor, right? I was not scared, but I fed up how how our politicians were acting, right? And then I left the job. I took a pay cut. I joined as an assistant professor in Karachi, right? And as assistant professor in Karachi, I have already in my mind that hey, I will start my company, right? So I wrote a HEC funding proposal for 40 gigabits back controller design. The proposal flushed away because our beloved president, current president, took the presidency at that time. That was a heartbreaking for me, right? I put myself away.
We worked on one thing for I stayed 6 months in as assistant professor, right? But in 6 months, what we did out that we streamlined the NED electronics department courses, and we opened the labs for students that the if an equipment is there, it should not be logged. Labs should not be logged, right? That was our motto, right? And then we scrutinize every final year project from the perspective that the kids are aware what they want to make, what they want to build, and can they make a final product. That's why I said to you that, okay, we used to say that thing that, hey, you are not making A380, because when you come to final year, all the students saying, oh, I will make a tank, or I will make a super satellite or super ship. A goal is good, but you cannot do it in 6 months. So pick up a part and take it to the closure, right? That is very important. So that you should not only learn the technology, you should learn every single process of the project management, right? And secure the funding. Try to sell it out, right? Try to find it out. Put up a research, put up a funding proposal for that one. Making sure that whatever you are making, even if it costs you the 1,000 rupees, that 1,000 rupees should not come from your pocket. Your bachelor, your final year project funding should come from somewhere else, right? It should not be the US funding, right? But if you know how you can take it out, the 1,000 rupees from someone's pocket, that can sponsor your wires, that can sponsor your printouts, right? Even 1,000 rupees is not nothing else right now, but you will know how to interact with people, how to put up your pitch, how to convince them that your project really valuable, that they should invest even if they have nothing to do, right? This is the journey part. This is the part that you should do, and this is we try to instill in students while I was an assistant professor, that hey, look from the funding perspective. Can I market it, right? Means that a very simple thing. If you are if you're on a George Arangi in Karachi, right? There's a lot of market around it. Can you gain 5,000 rupees from there as a funding from those shops? Can you sell them your idea? They don't know what the hell is happening in NIT final year project. But can you go and secure the funding? If you have this concept in your start of your final year, that hey, whatever I'm doing, I need to secure the funding. You will work on it pitch. You will remember how to write a funding project, right? How to write a funding proposal. Then if you need a funding for your masters, if you need a funding from your professor, right? If you need a funding from your ticket, you can do. This is the skill that you need to learn and do it out. By the way, I didn't do it. Okay. My funding proposal was very simple, right? I was simple looking, but this is what we try for the final year project. So we talk a lot. Okay. Intel Malaysia, Intel US, when I left Center for Advanced Research Engineering, I got my last day or the 1 week before, right? Or the time when I resigned it. I don't know what time frame, right? But I talked to my brother. My brother was in Boston. My छोटा भाई है, ठीक है? उसने कहा कि यार मसूद, इंटेल मलेशिया की जॉब आई हुई है, तूने अप्लाई करना है? मैंने कहा भेज दे भाई, देख लेते हैं. I applied and I got an interview call in 15 days, in 2 weeks. That's very fast, right? I had an interview on the last day of care. That मैंने दूसरे दिन ट्रैवल करना था कराची, लास्ट डे था, and I appeared in Malaysian interview. They asked me first question, right? आपको चिपसेट का पता है, माइक्रो प्रोसेसर का पता है? चिपसेट का मुझे बिल्कुल नहीं पता था. मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, 2 साल चिप डिजाइन में काम किया, चिपसेट का बिल्कुल नहीं पता, राइट? आई सेड नो, नहीं पता.
उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है, वो फिर बहुत कुछ पूछता है, फिर उसने मुझसे पूछा 40 मिनट्स के अंदर इंटरव्यू खत्म हुआ है, राइट, और मुझे पक्का यकीन था कि मेरा नहीं होना, राइट। मैंने उससे पूछा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कहते हैं अभी एक और स्क्रीनिंग इंटरव्यू होगा होगा डिफरेंट चीज़ है, राइट, बट दैट इंटरव्यू वाज फन। कि जो बंदा है उसके पास पहले सवाल के बाद सवाल नहीं था पूछने को, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो क्या पूछना चाह रहा है। So then I joined NED in 5th May, 10th of May. I was literally, because this was my first government job. I was completely fed up with all the bureaucracy, with all the things that आप जो काम करना चाह रहे हैं आपको नहीं करने दिया जाता, आप जो करना चाह रहे हैं, lot of politics. I got fed up. I sent an email to the Intel manager that, hey guys, and these are the exact words, that, hi folks, I appeared in an interview on this date. 3 weeks are gone, right? I expect that Intel is a very big company, and you will have the guts that if you want to reject me, you will say no to me in the email. And I sent it because it was a lot of pressure from the NAD and all other thing. Then I got a mail that, hey, HR didn't contact you. And then the HR start sending me different documents to sign and all that thing. And I wasn't surprised that I got this job or not. Once they send me the package and they talk to me on phone, then I realized it out that I got it. Merely lucky. Nobody high on the first interview, right? मैं कोई चीता नहीं था, ठीक है, but it was simple luck, right? Or secondly, I account mother's side, that the mother used to do a lot of pay for me. That's the case, right? Did good in Malaysia, put my whole things right. Did a very good relationship right over there. I got my first promotion in 1.5 years, right? I joined as a macro architect. I become the senior macro architect kind of a thing. Yeah, that's the case. Yeah. Then I got more. We put up a lot of things over there. I was the audio IP macro architect, right? And then they decided they want to move the audio IP to US. And since I was an international hire, they shifted me from Malaysia to US. And I used to have fun that people used to get the user guide. I'm the user guide for this IP, right? Second promotion again, when I went to 2014, I got another promotion in 1.5 year, work as an architect, macro architect. In Intel, there's a lot of meetings happen. Sometime I start my meetings at 9 o'clock, sometime at 6 o'clock in the morning, right, in US, and then it lasts to 7 o'clock night, and sometime at 10 o'clock as well. You do not get time to read any documents. You do not get time to read any new things, all new things kind of thing. So I acquired a skill was learned through listening. Sit in the meetings, use your background, and build your technology in a way that ask right questions. Questions, asking the question is a very good skill, right? And no question is a dumb. But this helped me out to learn in the meeting rooms, and I learned a lot, right? People thought that I have done a lot, and believe me, my senior wrote a 300-page document. I did not read it yet. I never got a time to read that spec, right? But successful. Meta, right? Applied an interview, and I know Rizwan was in that meeting, right? So we were sitting in a meeting, right? And we were discussing different packages, right? And I got to know that Google and Meta offered a very good package and said that, okay, I'm wasting my time in Intel. I look into all the contacts, right? That who I know in these two companies, and I applied to them. I use the referral, right? I applied, my first interview happens. I applied for the network on a chip architect. They rejected me. Then the person contacted me again. Hey, since you are working for the last 6 months in the power, do you want to apply for the power opportunity as well? I said, yeah, let's do it. I got a second attempt. I went to the interview because I have done all the basics over there. Interview prep. After first screening interview, first two screening interview, Meta has 6 interviews today, 2 full days. All right. And they go through everything. I was scared of
programming interview. Everyone in Rizwan will not agree with me on my approach. Everyone in Bay Area, when they need to appear in a programming interview, they go to the leader code, right? They go through those all programming skills and everything. I didn't do it because I thought that if I start reading off it, that leader code, I will not get any single idea from there, right? Because my brain is not that capable that I can understand the complex things. So what I did, I took a side approach. I took a Python book that I used to teach my son, and I simply go through all the examples, all the things, just reading, no writing. Because my programming skills that I got in NED University was enough even for last 20 years that I can write any code, right? If you give me a programming book, right? I went through for 2 nights. I went to the programming interview, joined as a Silicon Power architect, go through the 1.5 year, another promotion. Somehow this 1.5 years becoming the magical year. Right now, I'm working as a power tech lead in the augmented reality glasses solutions. Right, and yeah, we are looking so much more to do now. So, passion, right? I was very passionate in this um, whole presentation, right? Passion is a very loosely defined term. Believe me, it's very misguided term. You guys will disagree with me, but let me tell you my experience of it, right? Whenever you ask someone, whenever you go to your mentors, whenever you go there and ask them, hey, I want to work with you. You are doing good job, right? I want to work with you. I want to do. Everyone, what do you want to do? What's your passion? You should follow your passion. If you do the passion, you will be successful. Wrong for now, right? Passion. In order to develop your passion, you should have a field knowledge and guidance. People should tell you in order to get excited and passionate about AI and make yourself successful over there, you should at least understand what that thing is. Because if you do not do that thing, right, you will be jumping from the cliff without understanding the depth, without understanding what you need to do in order to save yourself from fall, right? Passion just tell you that you are very excited that you want to do. Field knowledge will tell you how you want to do. Whether your excitement is correct or just your crush, right? Crush and love is different. Sometimes we have a crush, we don't have a love, right? Field knowledge and the guidance will make you successful in defining your passion. But passion does not make you successful. Hard work and efforts. If you do not put your 100% on the table, if you do not believe that you will solve the gray area, if you do not burn your midnight oil, if you do not understand it out that, hey, I am the only one who can take it to the end, right? You will not be successful. You have to work hard. There is no shortcut from passion to success, right? This is what my understanding is, right? And this is where I end my talk to you guys. सर Yes, go ahead. सर जैसे आपने बुक्स को बड़ा प्रेफर किया है और पहले भी आपने से बड़ी अच्छी हैबिट्स है सर। ये लीड कोड के अंदर हम ज्यादातर एक ग्रुप्स के अंदर ही स्टडी करते हैं, प्रेफर किया जाता है सर। क्या इसके ऊपर बुक्स है, मतलब कि अरे इसका एक चैप्टर ही क्या लें, स्ट्रिंग क्या लें, आगे फिर इसके जितने भी पार्ट्स हैं, क्या उसका एक पूरा नॉलेज की कंसेप्ट को और जितने भी उनको बंदा पहले सीख ले और फिर जैसे भी कोडिंग का जिस तरह का भी आए क्वेश्चन वो उसको हैंडल कर सके? क्या इस तरह की कोई बुक्स वगैरह है अवेलेबल? मुझे लीड कोड नहीं आता यार। आई हैव नो क्लू व्हाट द लीड कोड इज। मैं अभी तक धक्के पे चल रहा हूँ। इंटरव्यू क्लियर हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है,
एक बार भी लीड कोड टच करने का नहीं हुआ, इत्तेफाक. So Rizwan can help you. I'm not the right person. Next question. जी सर, उबैद आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was really interesting and a lot of takeaways from this. And one of them is to take a break. मेरी पहले जो थी रूटीन वो ये थी कि मैं आई टेक ब्रेक व्हेन आई फील लाइक कि नाउ इट्स इनफ, आई शुड टेक अ ब्रेक. बट फ्रॉम योर एडवाइस अब से मेरी जो अप्रोच होगी दैट वुड बी कि आई शुड टेक ब्रेक अकॉर्डिंगली एवरी वीक. कमिंग टू माय क्वेश्चन दैट इज़ कि सर आपने रीडिंग के ऊपर बात की और सेल्फ थॉट के ऊपर कि आप यू शुड वर्क, पीपल शुड वर्क ऑन दैट. बट सर मेरा क्वेश्चन ये है कि विदाउट अ टीचर बुक्स कैन नॉट हेल्प यू. और मेजॉरिटी ऑफ द केस में यही होता है कि वी आर जस्ट गोइंग थ्रू बुक्स एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग अस. एंड सेकेंडली जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज़ कि आपने बात की पैशन के ऊपर एंड कि हाउ टू फाइंड के द थिंग दैट यू आर एंजॉइंग इट. तो लाइक आपने मास्टर्स के लिए बात की कि मास्टर्स को आपने एंजॉय करना है. तो सर हाउ टू फाइंड दैट थिंग कि हम उसको एंजॉय भी करें. तो आई वुड लाइक टू टेक नो योर टेक ऑन दिस टू क्वेश्चन. First thing, I disagree with you that you need a teacher. You need a teacher to discuss things for understanding. But just think of it, Kia, when you are doing your job and you are a tech lead and you are the principal architect or senior principal architect or fellows, right? You need to work on your own. You need to look, आपका time इतना बढ़ जाता है that you need to look into the 10 different things to making sure that your understanding is correct, right? Second, how to enjoy and what to enjoy is very much personal things, right? Nobody will force you to do the masters. Nobody will force you to do the PhD. Nobody should force you to study something, right? Yeah, sometimes life conditions does play around that thing, right? But you will always get the opportunity to do what you want to do. But my daughter wants to play video game for 6 hours and my son wants to spend 4 hours on Reddit. Yeah, that I will not allow them to do. So you need to understand it out that what is useful for you to do, right? If you're going for the masters and doing the party masters, don't do it. Next question. मैम समीना, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. सर स्टार्ट में आपने टॉक जब स्टार्ट की थी तो आपने बात की थी कि आप लोगों को वेरी फर्स्ट ये चीज डिसाइड करनी है कि आपने एट द एंड क्या बनाना है या क्या करना है, जो प्रोजेक्ट डिसीजन के बारे में होता है या कुछ भी. तो सर जब हम किसी भी लाइक जो सब लोग कर रहे हैं वो नहीं करना, कुछ हट के करना, ये आपने साथ बात कहा था कि आप ऐसा क्या करेंगे जो कुछ हट के होगा. तो सर फर्स्ट तो हम लोग नहीं डिसाइड, मतलब एट द बिगनिंग तो नहीं कर सकते, यानी जब तक या तो मिड होगा, मिड तक आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस सिस्टम की या उस इन्वायरमेंट की, तब आप डिसाइड कर सकते हैं. या अगर स्टार्ट में कुछ कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिनको देख के देखिए मैं आपको आप आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि आप स्टार्ट में नहीं डिसाइड कर सकते कि आपने क्या प्रोजेक्ट करना है, ठीक है. आप डिफरेंट करना ना करना जरूरी नहीं है, ठीक है, राइट. सो स्टार्ट में आप ये डिसाइड करें कि आपने करना क्या है, basically what you want to achieve from that project, right? Not at what you have to do in the project, what you want to do with the project. आपने अगर जॉब करनी है, ठीक है, तो आपकी नॉलेज के मुताबिक आपकी इंडस्ट्री जो अराउंड है उसके अंदर क्या जॉब ऑफर्स हो रही हैं,
किस चीज़ पे, या अगर आपने फॉरेन मास्टर्स के लिए जाना है, ठीक है, तो आपकी जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं उनके ऊपर किस चीज़ पे काम हो रहा है, राइट। एंड अगर आपने उस चीज़ पे काम करना है, ठीक है, कैन यू काइंडली कॉन्टेक्ट एनी प्रोफेसर of that university to ask about that, hey, I am the final year students, I want to do this thing, this is my passion, and I saw that you are doing some research on it. Can you kindly, I know that your time is very valuable, but can you kindly uh, guide me, I want to do this thing, right? How this is aligned, or how this is helpful, and this all. So ask the guidance. You will send to 10 people, you will get a reply from 2. Yes, Right. sir. But at least you will start when you read 10 thing, you will understand that, hey, if I want to do the masters in this university, I want to do in this area, right? Like everyone now wants to do in AI, right? But if you're going to NYU, and NYU का IP security program जो है उसका masters is very beautiful, is very classic, right? Oh, I want to do the IP security thing because मैं पहले से IP security की side पे हूँ. Let AI people aside, concentrate on IP security thing. And then in IP security, put it up one thing, okay, मैंने थ्रेट मैनेजमेंट करनी है, मैंने अटैक्स मैनेजमेंट करनी है, मैंने उनकी रेमेडी पे काम करना है, ठीक है, मैंने फॉरवर्ड प्रोडक्शन, मैंने क्या कहना चाहिए उसकी, फ्यूचर प्रिडिक्शन पे काम करना है, मैंने किस एल्गोरिथम के ऊपर काम करना है. Pick one algorithm and then see later out what are the benchmarks available. So now that is a different thing, that, hey, people have achieved this benchmark. Can I go and achieve another 10% to it? Yes, sir. That's how you can do. Next Yes. question. सर मोहम्मद दानिश, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें. सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द वेबिनार। आज बहुत कुछ सीखने को मिला, जबकि काफ़ी ज़्यादा बातें समझ नहीं आई मुझे। बट मेरा जो सवाल है वो, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी राइट नाउ, मैं पीएचडी परस्यू करना चाहता हूँ। तो आपकी जो क्या कहते हैं कैरियर के हवाले से सुनने सुनने के बाद जो समझ आई कि आप काफ़ी सारी चीज़ों की डेप्थ में गए हैं, इन एंड आउट ऑफ मैनी थिंग्स। तो क्या आप ये प्रेफर करते हैं किसी दूसरे को कि क्या वो भी पीएचडी राउट में इतना चीज़ों की डेप्थ में जाए? बिकॉज माई मैट्रिक इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक नॉलेज, इट इज़ ऑल्सो कैश। तो हम मतलब आई वांट टू टेक एडवाइस, या आप इस क्वेश्चन का जवाब दें या ना दें, यू कैन डायरेक्टली से नो। आई वांट टू plan my next 5 to 7 years. Yeah, cash is underlying thing. Okay. Dollar or rupees. That's the bottom line of it, right? And good if you're thinking like that, right? Okay, right? Yeah, ये देखो कि PhD के अंदर, when you are doing the PhD, right? I admire every PhD, right? PhD के अंदर you have to solve just one problem, and that problem is enough for your 5 years. Because वो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होते हो वो किसी ने सॉल्व नहीं किया होता. आपको ये भी नहीं पता होता कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो ठीक है क्या गलत है, राइट? सो डोंट, industry will give you time. I have a lot of things because I have worked at so many places, right? But I my personal advice to my son, right? She's joining college next year, right? That undergrad is not enough. You have to do at least masters, and after the masters, either do MBA or PhD. Your own choice. So if you are getting a chance to do the PhD, do the PhD. Because PhD is very valuable here. That's the case. Right? And sir, yes, If you yes, yes. one problem, right, that's a half solved before, you will add to certain, and maybe you are not able to solve the complete problem, right? It all up to you.
because you will get your time to select what problem you want to solve after your Yeah. coursework is completed. थैंक यू सर। इसी से कंसेक्यूटिव एक ही सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा पर्सनल है। इफ आपने कहा कि जो है यू गॉट लकी इन योर जर्नी व्हेन यू आर इन द प्रोग्रामिंग, तो एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ यू गॉट लकी। एंड आपने कहा कि ये एक हार्ड राउट है, मे बी बिकॉज यू डू थिंग्स योर वे, ज़्यादा मुश्किल तरीके से, इन डेप्थ। तो व्हाट इज द मोर ऑप्टिमाइज्ड वे? Lucky in the sense कि यार whenever I jump from the cliff, I always landed. ओके। And I jump from the cliff so many times in my life. Right? There is कि यार क्या कहना चाहिए कि अभी भी मैं ये कहता हूँ, मेरी मदर है आते हैं, अल्लाह ताला उन्हें मजीद ज़िंदगी दे, राइट, कि यार उनकी दुआएं हैं तो मैं बचा हुआ हूँ, बट अगर अपने बलबूते पे होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। और अल्लाह को, आई मीन, कनेक्ट योर सेल्फ टू अल्लाह, दैट्स वेरी नीडेड, दैट्स वेरी वेरी नीडेड, बिकॉज risk, cash, your life opportunities, everything is in his hand. He is giving, not your manager, not your company, not everyone in the life. Whatever you are getting, whatever you are spending, whatever you are doing charity, whatever you are enjoying is from Allah. Only from Allah. That's it. तो सर मैं थोड़ा ये समझाऊं कि मतलब कैरियर के शुरू में जोर लगाना चाहिए, पुट इन आवर, जस्ट लाइक यू। That's what I'm saying. Hard working efforts, right? This thing. I mean, अब नहीं जागा जाता यार, वरना till till 2018 I was able to work 36 hours even at this point. 2018, 2019, I know that I worked straight 36 hours to finish my projects. Last 3 years हैं जो कि सही मैं उनसे सो रहा हूँ। सही था। Yeah. Yeah, next थैंक यू question. सर। You're welcome. सर आपने जैसे कहा कि लास्ट 3 ईयर से आप तकरीबन स्पॉन्सर्स हुए, इससे पहले आप कैसे अपनी हेल्थ को मैनेज करते थे, या फिजिकल में देख लें इसको, फाइदर वो? Oh, health मैनेज हो जाती है, वीकेंड है ना। I'm not a very healthy person, don't worry. I'll pass this question. सर जी। सर एक टाइम था जैसे कि जब फोर्टन और कोबल के कोडर्स होते थे, तो सर अभी के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आते हैं या बहुत ही रेयर हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में हम काम करते हैं और हम सेमेस्टर के कोर्सेज में असेंबली लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज पे कुछ बेसिक कोडिंग करते हैं, अगर हम सर इस पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट हम इसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट कर दें, तो ये एक अच्छा हमारे लिए हो सकता है कि एक फॉर एग्जांपल एक अच्छी इंटरनेशनल या अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती है। या सर हमारा फ्लो किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सर जैसे फोर्टन और कोबल के जो कोडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अभी हमें इतना कॉमन नज़र नहीं आते, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या So you need to learn one programming language to your heart. Okay, जब हम हार्डवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग करते थे तो मैं अपनी सारी लॉजिक्स, सारे सॉल्यूशन सी में सोचता था, राइट। जहां तक वही असेंबली की बात, असेंबली इज इंपॉर्टेंट, राइट। 8086 की असेंबली, सॉरी, ए i86 की असेंबली, राइट। इफ यू नो असेंबली, assembly is important. I have learned assembly, right? If I want to ask you that out, that if you want to work on a DSP processors, and the DSP processors, you want to know that how the different optimization analysis you need to do from the code, you need to study the assembly. You need to go through the assembly code. I am going through assembly code even today. I mean, yeah, next week I have the task that I need to finish, that I need to finish the DSP assembly and DSP assembly code analysis. So assembly is everyday work, but you need to learn one high level language. If you're thinking that assembly is just the thing, then no, you should know another language.
And as far as the ancient dinosaurs are, yeah, I learned Fortran in the first year, and I never used it after that. I didn't even know how the context look like. But if you give me Fortran, I can do it in a day or two by just looking at its constructs. And things sometimes will come with experience. So you just have to work and work. Yeah. Next question. जी सर, जुबैर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सर फॉर सच अ ग्रेट वेबिनार। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ऑफ थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने मास्टर की है, और मैथमेटिक्स में मैं एक्सीडेंटली आया हूँ क्योंकि मेरे केस में यही था कि अगर पढ़ लिया तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। तो तो सर मैंने फिर मास्टर किया, और ड्यूरिंग माय मास्टर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए, तो मैंने एआई मशीन लर्निंग पे थोड़ा सा काम किया, पाइथन सीखी। फिर पूरे डिपार्टमेंट में मैं ओनली पर्सन था जिसने मशीन लर्निंग पे अपना डीप लर्निंग पे थीसिस लिखा। प्रोफेसर भी इतना वो नहीं थे इस फील्ड में। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट्स किए एआई मशीन लर्निंग में और काफ़ी काम किया, लेकिन स्टिल वही पैशन नहीं मिल रहा कि अभी इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। हालांकि मैं मैथ में भी अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। यार डिप्स आती हैं, मैं आपको बात बताऊं, समटाइम यू हैव टू लिव विद दोज डाउन्स, राइट? In the sense कि you have to regroup yourself, right? And you have to find something, right, to make a forward progress, right? सब पे आती हैं dips, okay? Job में भी आती हैं, right? Dips are normal, right? Every time, after some time, this question that, hey, why are you doing it? It's not worth. It's not your worth. Find something new, do something else, done. And then you find something different at the same place. Try to change your window of looking, that how you're looking at the things, right? You can start looking for the freelancing, right? You can start looking for any startups in US that can support over internet your work. Because if you have done something, you need to show it to the world, and you need to sell yourself out, right? And these dips are very common. These dips are very common. Um, spend some time on I mean, what I do. Let me tell you what I सर do. इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ अपने क्वेश्चन में कि जब मैंने 2020 के बाद मैंने फर्स्ट लैपटॉप लिया, इससे पहले मैं इस फील्ड में नहीं था, और जब मैं अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। Everyone is now trying to get PhD in computer science and lot of things, so इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, so ये चीज़ भी थोड़ी सी डिमोटिवेट कर रही है। So the very very simple thing, right? ट्रैवल कैसे करते हो? बस से करते हो, रिक्शा से करते हो, मोटरसाइकिल पे करते हो, कैसे करते हो डे टू डे के अंदर? सर बाइक पे करते हो, ठीक है ना? कभी भी किसी ऐसे सिग्नल पे रुके हो कि जिसके अंदर तुम्हारे सामने मोटरसाइकिल ना हो, या गाड़ी ना हो, या बस ना खड़ी हो? समटाइम इट्स बहुत कम, डिपेंड्स ऑन एरिया। बहुत कम, hardly, right? This is a life rule as well. Whichever turn you take, there will be so many people in front of you, but their journey is different, and your journey is different. So find your journey, okay? यहाँ पे 10 universities, 100 चलो अगर 80 भी कहते हैं, 800 students come
every year in a computer science from undergrad in California, 800. And I'm talking about that is coming from UCs, private universities, and others are separate. So you can easily account 15 to 2000 computer programmers or computer engineers or computer science students are coming out. Companies are not everyone get uh, the job. Everyone gets its own destiny, and everyone will be in front of you, right? You will find your own thing. Try to find that side out. Don't put yourself down that hey, people already know. Electronic industry, whatever you design will be discarded in 3 years or maximum 5 years. Done. So you are just 3 or 5 years behind, not 20 years behind. Or maybe if you start looking into it, you may be just 2 years behind that you need to catch up. That's the case. Any other question? जी सर। जी सर, दानिश आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर मेरा एक और सवाल है, ये पीएचडी राउट से रिलेटेड, आप क्या प्रेफर करेंगे आफ्टर फॉर एग्जाम्पल 5 years आफ्टर पीएचडी, किसी छोटे स्टार्टअप में काम करना या बड़ी कंपनी में काम करना, एंड व्हाट डू यू एडवाइस? जहाँ मिल जाए, जो अच्छी ऑफर दे, सिंपल फंडा. I have a friend, Amir Khiani, Amir Khani, Khurram बड़ा भाई था, Amir Khani. Amir Khani was one West Indian, right? He was a super programmer. So once he was coming out of NAD, right, and that is answer to the previous questions as well from Zubair, that he was so good that he was doing the computer vision programming in 1998, right? At that time, we were learning Fortran, right? And I don't have even the PC at home at that time, right? Once he come out after final year, I asked him that, hey, Amber, what is your plan? He said, I have an offer from Google, I have an offer from Microsoft, I have an offer from Cisco. I said, where you are going? He said, uh, whoever give me more. I met him here, right? And I said, yeah, fine. I'm not very much far behind from him. So a startup, no startup doesn't matter. I have a friend who has worked, I think, I have a friend who has worked, who is still working in a startup. They like a startup. I spent 10 years in a startup. But I have left now, no more energy for me that I can work in a startup now. That's the case. So after your PhD, whoever gives you more, join that one. Next question. जी सर, जुल्फिकार आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर थैंक यू वंस अगेन. अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि आपने जब भी लैंड किया एंड यू लैंडेड सेफली एंड इट इज बिकॉज ऑफ लक. तो और आई एग्री 100% विद यू कि वन मस्ट हैव अ ट्रस्ट ऑन गॉड. समटाइम कुछ चीजें आपको नजर नहीं आती. व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग द गॉड यू विल गेट सम वे आउट. लेकिन इवन देन एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम उसको जरूर इंटरप्रेट करते हैं. व्हाट वाज वो क्या ऐसी क्वालिटीज थी जो आपने फील बाद में किया कि ये वो चीजें थी जो मुझे लकीली वो सेफली लैंड करवाती थी वो आप. बिकॉज आपने खुद कहा कि मुझे लीड कोड को मैंने कभी टच नहीं किया, बट देयर वुड बी समथिंग ना इनसाइड यू जो आपने ऑलरेडी गेन किया होगा. या अभी भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके सामने अपने इश्यूज लेके जाऊं ना, तो अभी भी गालियां पड़ती हैं. ठीक है, वो मुझे सिंपल ये कहते हैं कि तुम अभी तक बच्चे हो, तुम इस चीज़ से बाहर निकलो. ऐसा भी होता है जिंदगी में, ऐसा भी होता है. सबके साथ अप एंड डाउन आते हैं. ठीक है, आई जंप, आई लैंडेड सेफली, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स एज वेल, राइट? My first job, Microsoft Tech, I did not tell you guys. I After first month, I put up a notice of a month that if I did not show the performance, I'll be kicked out.
right? It's not a thing. How to come out of thing, you need to trust sometime yourself. There's so many bad questions come to your mind, and that is pretty fair, right? मगर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको सर्कल से निकाल लेते हैं. सो ऐसे हैं, अभी भी हैं, कम होते हैं बट हैं. सो यू नीड, तो ओके, बॉटम लाइन, बहुत सारी परेशानियां आप अकेले नहीं हैंडल कर सकते. आपको एक सर्कल ऑफ कम्युनिटी चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी ट्रस्टवर्दी हो, राइट? वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आप खुल के बात कर सको, जो आपको जज ना करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट फेस ऑल अप एंड डाउन बाय योरसेल्फ. यू नीड अ कम्युनिटी. आपको एक कम्युनिटी चाहिए, आपको एक सर्कल ऑफ फ्रेंड चाहिए जो कि आपको राइट साइड पर डायरेक्ट कर सके. नॉट द टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल, real friend circle. So community is important. And one more question, because you have a very much experience and you are the fit person to answer this. I heard somewhere that there is no match of experience. तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछें तो वो आपकी डायरेक्शन को सीधा करने में बहुत हेल्पफुल होता है. वो बिकॉज ये कहा जाता है कि बुक्स जो हैं वो अच्छी होती हैं, but most of the time books cannot answer your specific question, but a experienced person can answer that. What's your opinion? बात यह है कि जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको दो तरफ से जवाब मिलता है, एक आपके जहन से, ठीक है, और एक सामने वाले बंदे से. जब आप सवाल नहीं पूछते तो दोनों तरफ से जवाब नहीं आता. तो बात यह है कि हाउ यू वुड नो कि सामने वाला एक्सपीरियंस है कि नहीं है. सो इसलिए कह रहा हूँ सम टाइम व्हेन, अगर आप उसके जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ यू थिंक ही इज एक्सपीरियंस, तो पहले आपको उसके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट में लोग हैं, आपको उनका ओपिनियन उसके बारे में जज करना चाहिए. अगर वो एग्री करते हैं कि ही इज राइट एक्सपीरियंस पर्सन, देन वन कैन आस्क, उस बंदे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हाँ, आप ये कर सकते हो. इफ यू गॉट दैट काइंड ऑफ अ गाइडेंस, यस, that is true. People are available for that things, right? People are available for guidance, right? iCode Guru is one of the platform for you from that perspective. And here I know Zafar Bhai, I know is one. They are very, they can answer so many queries. They can guide you well. Alright, so thank you so much sir, इतने ज़्यादा डिटेल में क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए. तो हम मजीद 2 क्वेश्चंस लेंगे, then we will conclude it this session. So yes, sir Abdul Rafi. अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे 1 मिनट बोलने की इजाजत देंगे? Sure sir. अस्सलाम वालेकुम सर मसूद, डॉक्टर जफर here. Thanks a lot. We always learn from you. तो guys, सर मसूद उन लोगों में से है जिनकी वजह से पाकिस्तान जाना जाता है. माशाल्लाह, वेरी ब्राइट, वेरी हाई IQ पर्सन, और जब ये किसी चीज का सोच लेते हैं तो ये कर भी लेते हैं. Zafar Bhai, बहुत आसमान पे चढ़ा रहा हूँ. it is a lot to learn from him. तो सर थैंक यू वेरी मच. सर मैं बस 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो iCode गुरु है वो काफी एलुमनाइज के साथ काम करता है, और उनमें जो सबसे ज्यादा क्लोज कोलैबोरेशन है और सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो NED की एलुमनाई है थ्रू कोशिश. तो पिछले साल तक कोशिश वाज फंडिंग द एयर टिकट्स एंड द इनिशियल लॉजिंग फॉर ऑल ऑफ अवर स्टूडेंट्स. इस साल उन्होंने कह दिया कि यार तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए हो, अब कहीं और से भी पैसे इकट्ठे करो. तो लेकिन हैट्स ऑफ टू कोशिश, माशाल्लाह, कि दे आर ऑलवेज अ सपोर्ट नेटवर्क फॉर अस. और NED एलुमनाई अदरवाइज भी स्ट्रॉन्गेस्ट एलुमनाई जो सिलिकॉन वैली में या पाकिस्तानियों की, वो NED की एलुमनाई है.
स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, और बाकी एलमनाइज इसके करीब करीब भी नहीं आते। देयर इज नो कंपैरिजन। दूसरी चीज के आपने पैशन की बात की, तो जो आई कोड गुरु पे हम स्टूडेंट से मांगते हैं वो सिर्फ मांगते हैं पैशन। बाकी स्टूडेंट की हम एसओपी भी लिख देते हैं, एलओआरस भी लिख देते हैं, उसे डोमेन भी ढूंढ के दे देते हैं, उसे स्कॉलरशिप भी ले देते हैं। तो एनीबॉडी, और इसके लिए हमें सिर्फ ये चाहिए कि आपका सीजीपीए जो 3 से ऊपर हो, ओके। और बाकी चीजें हम मैनेज कर लेते हैं। आपको कुछ आता है, नहीं आता, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है। कोडिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं है, हम करवा लेंगे। इंग्लिश ना आने का कोई मसला नहीं होता जफर भाई। बिल्कुल, तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारा प्री रिक्विजिट नहीं है। और इसी तरह आई कोड गुरु इज इवॉल्विंग इनटू अ कम्युनिटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके एक दूसरे से मोटिवेशन भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ अपने चैलेंजेस डिस्कस भी करते हैं। तो वी आर सॉर्ट ऑफ क्राउड लर्निंग, कि आपको जब एक चीज नहीं आती, आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन ऑब्वियसली यू विल बी सरप्राइज, कम से कम 10 लोगों को पहले ऑलरेडी पता है वो बात, हु कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों को, पीपल हु हैव बिग ड्रीम्स, वी आर हियर टू हेल्प देम। जिंदगी एक बार मिलती है, डर के ना गुजारें, अच्छे ड्रीम्स लें। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स में कम से कम 1 मिलियन स्कॉलरशिप होता है हर साल, और इसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए होते। तो इफ यू वांट टू हैव देम, यू कैन हैव देम। आपको सिर्फ प्रिपेयर करने की जरूरत है। तो थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करें। थैंक यू जफर भाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स सर। सो जी सर, अब्दुल राफी, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी इंसाइटफुल सेशन। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल सा था आपसे कि आप आपके पर्सपेक्टिव से आपने मेंशन किया कि आपकी जो मेटा में जॉब हुई थी, वो आप कह रहे थे कि कॉन्टैक्ट्स की बिल्डिंग की, रेफरेंस बिल्डिंग के थ्रू हुई थी। तो आपके पर्सपेक्टिव में रेफरेंस बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और कितना आपको उसका कितना फायदा हुआ था उस चीज़ का? मेरा बस ये सिंपल क्वेश्चन है आपसे। और रेफरेंस ये होता है यार, रेफरेंस का चूंकि इन फॉर एनी जॉब व्हेन इट इज एडवर्टाइज्ड, राइट, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। जब आप किसी रेफरेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं, देन यू कैन गो टू द इंटरव्यू टेबल। जो आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू टेबल है, वो आपका रेफरेंस सिर्फ वहां तक आपको लेके चला जाता है, दैट योर सीवी इज कंसीडर्ड, राइट, एंड दैट इज इट। उसके बाद आप खुद हैं, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए करना, सारे आंसर्स करना, वो आपकी अपनी स्किल्स है। बट रेफरेंस डज मैटर, क्योंकि इंटरव्यू टेबल तक पहुंचने के लिए काफी बड़ी जद्दोजहद है। ओके सर। यस सर। अच्छा, इसमें एक जी चीज मैं सर। ऐड करूंगा कि आई कोड गुरु स्टूडेंट्स की हेल्प करता है रेफरेंस ढूंढने में, रेफरेंस दिलवाने में, और इंटरव्यू टेबल तक पहुंचाने में, प्रोवाइडेड के हमें खुद यकीन हो कि स्टूडेंट को काम आता है। और अगर हम खुद हायरिंग मैनेजर हूं, तो हम उस बंदे को हेल्प करना चाहिए। यस, दैट्स सही द है। बॉटम। तो बिल्कुल, तो आप रेफरेंसेस वगैरह को भूल जाएं। आप समझें कि आप गूगल में इंटरव्यू दे सकते हैं, इफ यू वांट टू, इफ यू आर रेडी। तो वो क्या कहते हैं, वी हैव लॉट ऑफ रेफरेंसेस ओवर हियर। सर जफर, थैंक यू सो मच। यस सर। तो सर मेरा क्वेश्चन तो ये है, जस्ट अ क्विक फीडबैक, कि सर आपने जो अपनी जर्नी सारी शेयर की, उसमें सर मैं आपको एक रिकमेंड, ये मतलब वेरी, मतलब आई डोंट नो कि हाउ टू से दैट, बट सर आप इसको थोड़ा बैलेंस्ड अगर रखें ना, कि यू टॉक अबाउट योर सक्सेस एंड फेलियर्स इक्वली, तो वो लोगों के लिए इजी होगा। लाइक ये है कि लोग फिर ये है कि थोड़े डिसअपॉइंट भी होते हैं कि यार सर ने तो ऐसे कर लिया, पता नहीं मैं कैसे करूँगा। तो आपने फेलियर्स की बात की, आपने जिस तरह कहा कि आई डोंट नो हाउ टू मेक, मतलब मेरे से अभी भी फिल्टर्स नहीं बनते, एंड दैट थिंग अबाउट माइक्रोटेक, के वो जो आपने बताया था कि मुझे ऐसे क्या कहते हैं, नोटिस का बारे में थोड़ा सा आपने बताया था, एंड वन थिंग एंड आई एम मिसिंग, यस, वो जो एचएससी की फाइनेंसिंग वाले था। तो यस, जैसे सर रिजवान भी अक्सर कहते हैं कि एवरीवन्स लाइफ इज़ नॉट लीनियर, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी यही सजेशन है कि सर नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं पे इस तरीके से दें, तो इट वुड बी रियली वेल, के दोनों को इक्वल रखें, तो काफ़ी अच्छा होता है वो ऑडियंस के लिए। You know, the bottom point in Denmark was that when I applied for the 100 places, right, and I get 100 rejection.
उस Yes, टाइम sir, exactly. सोच रहा होता है कि यार क्या कुछ काम किया भी है जिंदगी में कि नहीं. But yeah, I took your point. Thank you. I took your feedback. अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इस पे मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ कि जो है ना, कई दफा जब आप चीजों को शुगर कोट करते हैं तो अगले बंदे को पता ही नहीं चलता कि असल मैसेज क्या था. और इन लाइफ जो अच्छी टीम्स, अच्छी कंपनीज दुनिया में बनी है ना, वो सिर्फ इसलिए बनी है कि वो ऑनेस्ट फीडबैक पे चलती हैं, वो शुगर कोटिंग पे नहीं चलती, वो बैलेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करती. और जो बैलेंस वर्ड है, इसका मतलब हर बंदे के लिए डिफरेंट है. मसलन एक बंदा है घर का लाडला, आता जाता कुछ नहीं है, जॉब पे गया, मैनेजर ने पहले दिन बेइज्जती की, और मैनेजर ने ऑनेस्ट बेइज्जती की कि भाई कहाँ से मुंह उठा के आगे, आता ही कुछ नहीं है. और बंदा कहे यार मैनेजर बहुत बदतमीज है, इसने मुझे ये नहीं कहा कि सर प्लीज बैठें, सर प्लीज आप थोड़ा सा ना इसको जरा डीपली चेक कर लें, आपकी शायद कोड में 2 बग हैं. तो इफ तो जो ऑनेस्ट कंपनीज होती हैं वहां पे यू कॉल स्पेड अ स्पेड. ऑनेस्ट कंपनी में देखें, कंपनीज चलती हैं हमेशा टीम स्पिरिट पे. जिस तरह आपकी फुटबॉल की टीम हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक प्लेयर कमजोर हो तो आप उसे बैलेंस रखते हैं, आप उसे रिप्लेस करते हैं नए प्लेयर से. तो देर आर 2 ऑप्शंस इन लाइफ, इधर टू मूव फॉरवर्ड, इधर टू लीड द वर्ल्ड, इधर टू बी सक्सेसफुल, या आप बैलेंस रख लें. तो और जो बंदा बजाय इसके कि मैसेज को समझने के और अप्रिशिएट करने के इस चीज में लग जाए कि मेरी ईगो हर्ट हुई है, तो प्रॉब्लम इज विद दैट पर्सन. प्रॉब्लम इज नॉट विद द पर्सन हु इज गिविंग ऑनेस्ट ओपिनियन. उसकी रीजन क्या है? ऑनेस्ट ओपिनियन देना बहुत मुश्किल काम है. क्या आप एक बंदे के साथ भला कर रहे हैं, उसे एक चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बंदा आगे से माइंड कर लेता है, इट ऑलवेज हर्ट्स. तो बेहतर है कि आप अच्छा इखलाक रखें, उसके साथ अच्छे प्यार से बात करें, उसे फेल होने दें लाइफ में. तो जब भी आपको कोई बंदा फीडबैक दे रहा हो, always look for honest feedback, never good look for a balanced feedback, because the word balance is different for every person. वो मेरे लिए डिफरेंट होगा, आपके लिए डिफरेंट होगा, वो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए डिफरेंट होगा, वो एक गांव के बंदे के लिए डिफरेंट होगा. तो इसलिए दिस इज अ पर्सनल पर्सपेक्टिव. और आई कोड गुरु पे हम अप्रिशिएट करते हैं कि स्पीक योर हार्ट आउट, दिल से बात करें, एंड ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुंचे. बाकी ऑब्वियसली बीच में 10 लोग माइंड करेंगे, 10 लोग ये देखेंगे बंदे ने ना इसका एक्सेंट ठीक नहीं था इंग्लिश का, ठीक है, या बंदे का तुक्का लग गया, या बंदा बहुत प्राउडी होगा, लेकिन 10 ऐसे होंगे जो उसमें से एग्जैक्ट मोटिवेशन दे. दीज आर माई 2 सेंट्स. Thank you, Zafar bhai. राइट. और वो जो है नॉर्मली जो है जब तक आप में ईगो होती है, यू कैन नॉट लर्न. जब आप ईगो साइड पे रख के काम करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को भूल जाते हैं, तो यू गो हायर एंड हायर. तो लाइफ में ये चूज कर लें कि आपने कितना ऊंचा जाना है. जब तक ऊंचा जाना उस वक्त तक ईगो साइड पे रख के काम करें. यहाँ पे हम लोग बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, और जितनी सीनियर पोजीशन में हैं, दिन में उतनी ज्यादा बेइज्जती होती है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स. बस मैंने एक चीज पढ़ी, एक काम किया, और दूसरा बंदा एकदम कहेगा यार ये बहुत बोंगा आइडिया. इवन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले भी, बिकॉज एवरीबॉडी वांट टू बी सक्सेसफुल, अवर नेक इज ऑन द लाइन. हमें पता है कि हमारी जॉब लूज हो जाएगी, प्रोजेक्ट फेल हो गए, तो इसलिए हर बंदा जोर लगा रहा था. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट थिक स्किन. हम चीजों को माइंड नहीं करते, हम वे ऑफ कम्युनिकेशन को माइंड नहीं करते. वी आर लुकिंग फॉर द ऑनेस्ट आंसर. तो ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ, try to be honest, try to speak out, and ignore the people who mind it, because they are not, you do not want to work with them. चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. मैंने थोड़ा सा इससे ज्यादा बोला हूँ ताकि सबको चीज क्लियर हो जाए कि आई कोड गुरु इज फॉर ऑनेस्ट डिस्कशंस, इट इज नॉट फॉर बैलेंस डिस्कशन. वी एम वर्ड बेस्ट जॉब्स, वी एम वर्ड बेस्ट कैरियर्स, वी डू नॉट फाइंड बैलेंस कैरियर्स. थैंक यू सो मच सर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर वकास, अपना क्वेश्चन पूछना. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam.
सर मीटिंग के स्टार्ट पर मैंने एक क्वेश्चन चैट में पेश किया था कि आपको चैट विजिबल है? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। give me a sec. सर 10 सर बजे आप के अपना करीब क्वेश्चन देखिएगा। रिपीट सर आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दी क्वेश्चन इज लॉस्ट, प्लीज जल्दी से 2 सेंटेंसेस में 4 में रिपीट करें। ऑलराइट सर, ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो सर बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द थ्रो आउट द लेटेंसी synthesizers and difference between FSM and GSM, difference between C code and Verilog code in any component design, flip-flop, adder, subtractor, mux, etc. And how can I improve my DST course enrolled currently in 7th semester? Yes, sir. So there are different books. I would suggest it out that there are some basic books that you can use, right? सर एक्सक्यूज मी सर, सर इसके एंड पर थोड़ा सा और था भी चैट। इसके अंदर 7th सेमेस्टर से ऑनवर्ड थोड़ी चैट थी कि टुवर्ड्स डीएसटी को इम्प्रूवमेंट कर टुवर्ड्स करना है एम्बेडेड के लिए, तो क्या आपकी राय है उसमें? Yeah, embedded is a completely different domain, right? आपको you need to look for the books, ठीक है? मैं क्या करता था, मैं तुमको अपना बता देता हूँ, right? For the books, people go to Amazon. I will go to the library, right? Library of my university and library, local library. And you can't believe it out that I find so many books over there. So आपको ये बताऊंगा कि you should study your library aisles in a way that you should know which books is where, right? Go there, go to the library aisle of your university, right? Go there, pick up the book, go to the table of content, look into the thing that what you are looking for, जो आप देख रहे हो वहाँ मौजूद है, उसको ओपन करो, उसकी फर्स्ट 5 to 6 लाइन्स पढ़ो, राइट? जो भी आपको मुश्किल लगता है, राइट? आपको एक टॉपिक पे वहाँ पे एटलीस्ट 2 बुक तो होती है हर लाइब्रेरी में, ठीक है? दूसरी बुक उठाओ, देखो कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा, उस बुक को पढ़ना शुरू करो, राइट? ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इंटरनेट इज़ वन रिसोर्स, चैट जीपीटी इज़ अनदर रिसोर्स जो कि अब आ गई है, ठीक है? गूगल चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, ठीक है? सर क्वेश्चन 3 को जस्ट करने सिर्फ। अगर आप एम्बेडेड के ऊपर जाना चाह रहे हो तो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग के बुक्स आते नो सर, क्वेश्चन 3 वेरिलोग और सी कोड के डिफरेंस के बारे में जस्ट। हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आपने हार्डवेयर के लिए करना है, आपने ट्रांजिस्टर्स अगर लिखना है, देन यू विल यूज वेरिलॉग। सी लैंग्वेज इज वन हायर लेवल लैंग्वेज, राइट? आई मीन ये दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार सी में और पाइथन में क्या फर्क है, completely two different language used for two different purposes. Yeah. So मैं my आपको question is about on hardware based means के chip designing and अच्छा something सर, इसमें इजाजत दें, controller मैं design। अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐड कर दूं। जी जफर भाई। जी जी, देखें, आपका क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, और मैं इससे फुल्ली रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर का कोर्स नहीं पढ़ा, एक ही पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू फोर्ट्रान। तो अगर आपको कोई भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है तो नॉर्मली दूसरी लैंग्वेज में जाना टोटल 1 से 2 हफ्ते का काम होता है। जिस तरह मैं अभी जो कोड रिव्यू करता हूँ जूनियर इंजीनियर्स का, वो 1 डजन से ज़्यादा लैंग्वेजेस में करता हूँ, और मैं जो खुद काम करता हूँ वो नॉर्मली मैं सी या C++ में कर रहा होता हूँ। तो जब आपको बेसिक लैंग्वेज का जब आपको सोचना आ जाता है ना उस तरीके से, तो देन लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो मैटर इतना नहीं करता, वो बड़ा इजी हो जाता है। तो आप किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ें और उसमें एनफ प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी।
सर डू यू थिंक के इसमें कोर्स में और इसके जो होती हैं लेयर्स में फ़र्क है, हार्डवेयर की लेयर्स में, दोनों लैंग्वेज की? इससे ये क्या कहते हैं कि लेयर्स में यानी कि ऑब्वियसली सी अब हायर लेवल पे काम करती है, जो वेरीलॉग है वो नीचे आरटीएल बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे काम करती है। ये समझ लेंगे ये दोनों डिफरेंट पर्पजेस के लिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली लॉजिक जो बिल्डिंग है वो एक ही तरीके से होती है। जिस तरह मैं सी में एल्गोरिदम लिखता हूँ तो मेरे मेरे टीम मेंबर ही जो कि हार्डवेयर डिजाइन करते हैं वो मेरे कोड को आरटीएल में मूव करते हैं, और फिर हम टेस्टिंग करते हैं कि सी लैंग्वेज की और जो आरटीएल है उसकी आउटपुट बिट बाय बिट एग्जैक्ट हो। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, लेकिन इसको जरा थोड़ा मजीद और थोड़ा सा बता दें। चलें इसके ऑफलाइन डिस्कस करते हैं, ठीक है? आप किसी भी सेशन में आ जाएं आई गुड गुरु के, तो मैं वहाँ इसको ज़्यादा एक्सप्लेन, मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सर भाई। जी Alright. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अगर किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। सर मेरा एक जी सर दानिश। अ, जी सर मसूद अगर आप हम कोई और सवाल हो तो आप लिंक्डइन प्रेफर करते हैं या ईमेल? या नथिंग? Yeah, LinkedIn is a better way to connect, right? But there are some phases that come where I do not check anything. Okay, no problem. But if you want to contact, yeah, I can answer that those questions. Fine, I'll try my best. Yeah, यस सर, मैंने सवाल लिख दिया, बस मैं सेंड ही कर रहा हूँ। चलिए जी सेंड कर दीजिए। चलें So, सर, थैंक यू alright. वेरी मच। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच। और स्टूडेंट्स आई एंड डॉक्टर रिजवान आर अवेलेबल अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो सर मसूद थैंक यू वेरी मच, इट वाज ग्रेट। हम आपको दोबारा भी तंग करते रहेंगे, ऑफलाइन भी तंग करते रहेंगे गाइडेंस लेने के लिए, ठीक है सर? थैंक यू। Thank you so much, sir, Thank for you, your sir. time. चलिए, थैंक यू वेरी मच मसूद भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, जनरली कोई फीडबैक है तो वी आर हियर फॉर सम टाइम।